today. We feel privileged to have gathering of revered personalities amongst us. We are truly honored to have the dignitaries on the dais, Dr. Nirmaljeet Singh Kalsi, Honorable Chairman, National Council of Vocational Education and Training, Dr. Vikas Chandra Rastogi, Honorable Principal Secretary, Higher and Technical Education Ministry, Maharashtra State, Dr. Vinod Mohitkar, Honorable Director, Directorate of Technical Education, Maharashtra State, Dr. Digambar Dalvi, Honorable Director, Vocational Education and Training, Maharashtra State, Dr. Suhas Deshmukh, Honorable Director, National Council of Vocational Education and Training. Before we start today's program, I, Shilpa Gaikwad, lecturer at Vidyalankar Polytechnic, would like to once again extend a warm welcome to our respected dignitaries on the dais. Pramod Naik Sir, Director MSBT, Dr. Chitlange Sir, Secretary MSBT, officials of DTE and MSBT, and principals and teachers of all esteemed institutes to this special event, Amrit Kal Vimarsh, Vikasit Bharat at 2047. It's our tradition to worship Goddess of Knowledge and Wisdom before any important event. So let us dedicate our prayers to Ma Saraswati. I request all to rise for Saraswati Vandana. Ya kundendu tusharharadhavana, ya shubhravastramruta, या वीणा वरदण्डमण्डितकरा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता, भगवती निःशेष जाड्यापहा. Thank you, everyone. Let us begin with the felicitation of our honorable guests. First, I request Dr. Vinod Mohitkar to kindly felicitate Dr. Nirmaljeet Singh Kalsi. Thank you, sir. I request Mohitkar sir to felicitate Shri Vikas Chandra Rastogi. Thank you, sir. I request Shri Yogesh Patil to kindly felicitate Dr. Digambar Dalvi. Thank you, sir. I request Shri Yogesh sir to kindly felicitate Dr. Suhas Deshmukh. Thank you, sir. I request Shri Vishwas Deshpande
to kindly felicitate Dr. Vinod Mohitkar, sir. Thank you, sir. Vidyalankar's journey of pursuit of excellence in academics commenced from the year 1964 by its pioneer, Shri C.S. Deshpande. Taking the legacy ahead, our managing trustee, Shri Vishwas Deshpande, under his visionary leadership, is striving to be the best in creating a knowledge center, which includes Vidyalankar Institute of Technology, Vidyalankar School of Information Technology, and Vidyalankar Polytechnic. We are committed to prepare students to cater to the societal needs. For this purpose, Vidyalankar has been organizing various events on upcoming technologies, new initiatives in engineering and skill sector. Today's event dialogue session under the Amrit Kal Vimarsh Vikasit Bharat at 2047 is one more value addition, giving an opportunity to all of us to understand various vocational education related new initiatives in view of NEP 2020. Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi introduced the concept of Amrit Kal, or the era of elixir, to the entire nation on India's 75th Independence Day. Amrit Kal is the Prime Minister's vision 2047 for New India, a new dawn for a country which will bring with it the chance to fulfill the nation's aspirations. He envisioned the coming 25 years to restructure all fragments of Indian economy through rapid profitable growth, better living conditions for all, infrastructural and technological advancements, and reawakening the world's trust in India. The Pancha Pran, or the 5 fundamentals of Amrit Kal, includes the goal of developing India, elimination of any trace of the colonial mindset, honor and pride in our roots, development of unity and a sense of duty among citizens. Amrit Kal Vimarsh Vikasit Bharat at 2047 is a visionary blueprint for India's transformation into a developed and inclusive nation by its centenary in 2047. This plan invites the collective efforts of government, civil society, and the private sector to work together towards the realization of these ambitious goals. With determination, innovation, and perseverance, India has the potential to emerge as a shining example of a successful forward-looking nation. And nation's identity is determined by the prowess of its youth. With this vision, we all gathered to hear it from policymakers about key themes from National Education Policy 2020 and understanding the significance of National Credit Framework. Now I request Dr. Vinod Mohitkar, Director DTE, to explain the objective of today's event. सुप्रभात। आज अमृतकाल विमर्श विकसित भारत @2047 के प्रथम चर्चा सत्र पर मंच पर उपस्थित आदरणीय डॉक्टर निर्मलजीत सिंह जी कलसी सर, चेयरमैन NCVT, आदरणीय श्री विकास चंद्र रस्तोगी सर, प्रधान सचिव उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग महाराष्ट्र शासन, सन्माननीय दळवी साहेब, संचालक DVT, सुहास देशमुख, डायरेक्टर NCVT, माय कलीग डॉक्टर प्रमोद नाईक, या संस्थेचे विश्वस्त श्री विश्वासजी देशपांडे आणि माझ्या मित्रांनो, आज का ये विचार विमर्श का पहला सत्र, कलसी साहब ने अभी हम चर्चा कर रहे थे तब बताया था कि सर का ये कहना था कि ये महाराष्ट्र ऑलरेडी विकसित है, तो यहाँ से चालू करते हैं सो दैट यहाँ का जो वेव्स है वो ऑल ओवर अच्छे तरीके से जाएगा।
और आप सभी को पता है कि हमारा जो स्ट्रेंथ पॉइंट है इंडिया का वो है यूथ, और ये यूथ कैपिटल को अगर हम सही दिशा में ले जाना चाहते हैं तो शिक्षण के अलावा कोई दूसरा दायरा, कोई दूसरा रास्ता नहीं हो सकता। अगर ये हम सही दायरे में लेके जाना है हमारे यूथ को, तो शिक्षण प्रणाली को हमें सक्षम बनाना होगा, और ये सक्षमता शिक्षण प्रणाली में लाने के लिए दो कीवर्ड्स है आज के जो चर्चा सत्र में आएंगे, एक NEP 2020 और नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क। दीज टू वर्ड्स गोज हैंड इन हैंड, क्योंकि NEP का इम्प्लीमेंटेशन जैसे चालू होगा वैसे वो करते समय NCrf नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क मतलब मल्टी पॉइंट एंट्री मल्टी पॉइंट एग्जिट, जो बच्चा कंटिन्यूस पढ़ नहीं पाता है कुछ कारणवश, वो एग्जिट करके कैसे और सिस्टम में आएगा और वो सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री, PG ये कैसे उसको सर्टिफिकेट मिलता जाएगा, ये फ्रेमवर्क NEP ने हमको दिया है। और कलसी साहब, हमें कहने में बड़ी खुशी है कि महाराष्ट्र इज द ओनली स्टेट वेयर इन वी हैव इम्प्लीमेंटेड this NEP 2020 in engineering education at all our autonomous engineering institutes, 58 engineering institutions, and diploma institutes also. About 350 diploma institutes we have affiliated with MSBT, and we have started implementation from the academic year 23-24. In addition to this, जो हमारे जनरल एजुकेशन के कॉलेजेस ऑटोनॉमस है 92, उनके यहाँ भी हमने NEP 2020 इम्प्लीमेंटेशन चालू करा है, और अगले साल से यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड सिस्टम में ये इम्प्लीमेंटेशन एकेडमिक ईयर 24-25 से चालू होने वाला है। तो जो ऑनरेबल प्रधानमंत्री महोदय का जो एक विकसित भारत का उद्देश्य है, ध्येय है, स्वप्न है, उसको साकार करने के लिए ये NEP के माध्यम से अपने को whatever the stakeholders we have assembled here, and online facility also have joined us. Let us deliberate on these issues. बहुत सारे चर्चा आज तक हुआ है, ये जगह से भी 2-3 वर्कशॉप हुए हैं, NEP को हम आगे लेके जा रहे हैं with the positive energy and positive support of our honorable minister श्री चंद्रकांत दादा पाटिल and honorable secretary sir श्री रस्तोगी सर, इनके एक ध्येय धोरण से हम आगे जा रहे हैं, and with the support of you all की स्टेक होल्डर्स। सर, यहाँ सामने अभी हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रिंसिपल एकेडमिक कोऑर्डिनेटर, पॉलिटेक्निक के प्रिंसिपल एकेडमिक कोऑर्डिनेटर, देन वोकेशनल के ITI और शॉर्ट टर्म कोर्सेज के प्रिंसिपल एकेडमिक कोऑर्डिनेटर, एंड 10वीं 12वीं के मुख्याध्यापक भी है। तो ये सब ऑल स्पेक्ट्रम हमने यहाँ बुलाया है सो दैट ये विचार विमर्श एक पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जाए। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट। Thank you, sir. For the successful implementation of any national policy, state and union play a great role. Today we have with us Shri Vikas Chandra Rastogi, Principal Secretary, Higher and Technical Education, to explain our state initiatives in the implementation of NEP. Sir, kindly guide us. We are indeed privileged to have Dr. Nirmaljeet Singh Kalsi, Chairman NCrf amongst us today, to not only guide us but also discuss various new ideas, various new reform measures that Government of India is undertaking. And I think the most important aspect is these reforms are being taken after extensive discussion with the stakeholders like all of you, the state governments and other bodies. And that's why all the reforms are being appreciated across the country, are being accepted, and we are really privileged to have you, sir. Welcome to Mumbai. Sir, as you are aware, Maharashtra is one of the leading states in terms of industrial as well as services sector, and the bulwark or the hallmark of this reputation is because of the skilled manpower, the engineers and other skilled manpower that our institutions have been producing over the years. And Maharashtra has been also a leading state in terms of reforms in technical education. So as we were just discussing, we have
boards for vocational education, board for technical education, and now we are shortly coming up with board for art education. And these boards have created a lot of trust among stakeholders. They have taken initiative to ensure that quality matters, and that is one of the reasons that we have second highest NBA accredited programs in this country. So, and that's because of all of you. I mean, we have only been trying to pursue, but you are the people who have actually taken up this challenge, and we are the highest in terms of NAC accreditation, second highest in terms of NBA, and we plan to have much more accreditation in the years to come. Sir, NEP has come as a reform which probably all of us were waiting for, and these are really exciting times. Lot of things which our principals, our managements, our administrators, academic administrators were thinking and hoping that would happen. NEP has made it possible in the last 2-3 years. From this year, as all of you know, we have implemented NEP in all autonomous colleges, both traditional as well as professional, and also polytechnics, all autonomous polytechnics across the state. And this is a measure which probably is beyond its time, because even AICT has not issued guidelines, but we have kept the spirit of NEP in mind, the reforms that have been progressed by NEP, and also the flexibility that has been given. In fact, it's a paradigm shift. When we say flexibility, our institutions are generally a little worried or little apprehensive, because they have a habit of prescribing to either university statutes, ordinances, or MSBT regulations. But this is for the first time when NEP says that please take your own initiative, and these are only guidelines, and try to implement in full letter and spirit, not only letter but also spirit. And I am happy that many of our institutions are taking a lot of initiatives in implementing on NEP. So in terms of governance reform, the state has taken a number of measures to institutionalize these reforms. One is skill university. So Maharashtra has 2 private skill university and 1 state skill university to mainstream and reform the skill education completely. Of course, we have private universities which are more than 25 in number. We have institutions of national importance. We have state universities close to 20, and there are a number of deemed universities who are doing extremely well. So in terms of governance structure, the Maharashtra has taken a lot of lead. Recently, we have come up with a policy of cluster institutions or cluster universities, wherein institutions and colleges of the same management can come together and provide a completely multidisciplinary and holistic education experience to our students. So if somebody is studying in arts, science, commerce, and the same management has another college of engineering or maybe pharmacy, then these students have the liberty to take up courses in other colleges, institutions of the same, and this will happen through cluster university. The cabinet has passed the policy recently, and we are hoping to have another 15 to 20 cluster universities in next year or so, and that will completely revolutionize the education system as we see it, because even the NEP says that we should move away from the affiliation culture, and we should have colleges which will be having a degree awarding status, or universities in their own right. We call multidisciplinary education and research university, MERU. So this cluster university is bringing that policy to reality, and all of us are really happy, as Dr. Kalsi has also mentioned, that he will not only guide us about what are the reforms Government of India has undertaking and is in the process of undertaking, but also would invite ideas from the participants here in order to have a better understanding as to how the state is doing and what are the aspersions or queries from all the stakeholders. So once again, sir, I welcome you to this Vikasit Bharat workshop, and hope that it will be really useful to all of us. Thanks.
Thank you, sir, for your insight on states' initiatives in implementation of NEP. Today we have with us Shri Dr. Nirmaljeet Singh Kalsi, former civil servant from Indian Administrative Services, 1984 batch, Punjab cadre, superannuated in June 2019 as additional CS, Home Affairs and Justice, Government of Punjab, 39 years of public service including at NTPC and Indian Railways. Presently, sir is chairperson in National Council for Vocational Education and Training, the national regulator for skilling ecosystem. We are all excited to hear from our chief guest, Dr. Kalsi, about key themes of NEP and significance of National Credit Framework. Sir, request you to kindly take over the proceedings and guide us. मेरे बहुत प्रिय मित्र रस्तोगी जी, डॉक्टर मोहितकर, डॉक्टर दलवी, डॉक्टर देशमुख, यहाँ के सारे कॉलेजेस के प्रिंसिपल साहबान, डायरेक्टर साहबान, द मेंबर्स ऑफ द फैकल्टी, friends, I'm extremely happy to be here, and I understand that all of you represent the cream of Maharashtra as far as education and skilling is concerned. And I'm here to share with you the vision of national education policy and how this policy is to be implemented through the National Credit Framework. No, NEP 2020 came in on 29th of July 2020, and we just completed 3 years of that period. However, we set up a committee to work out a mechanism for implementing the provisions of NEP 2020, and that committee was Committee on National Credit Framework. So the committee comprised of members of all regulators of the Ministry of Higher Education, School Education and Skill Education, and of course the chairperson of CBSE and some of the other eminent people. So it gave its findings, it gave the final recommendations, which were then accepted by the ministry and notified by the UGC. Now before I really do that, I want to talk about Viksit Bharat. Today when we talk about Viksit Bharat, we get a very, very good feeling. Growing at 6.5% year on year, having
average age of less than 29 years, 1 billion people below the age of 35 years. Very importantly, 67% people in the working age group. And this is going to peak around 2031 when we will have almost 68-69% people in the working age group. Now, huge remittances we are receiving from outside. That means we have spread ourselves across the globe. It's not only in India. We aspire to be the manufacturing powerhouse. You all know that we are already the IT and services powerhouse. Now, this resilient economy is shock-proof. That means 2/3 of our economy depends on the domestic consumption. So, to some extent, we are shock-proof, spending a lot of money on social sector. And as Honorable Prime Minister has always said, that the focus is on skilling, reskilling and upskilling. And India will remain the largest supplier of manpower, either offshore or on-site, in next many years, till 2055 for sure, could go up to 2070. But there is only one condition, that manpower has to be skilled properly as per the international standards. Some of the other positive factors, we have more than 7,000 projects in energy sector, road sector, urban sector, railways, totaling more than 111 lakh crores. And we need people for implementing these projects. We need skilled manpower for doing this. Globally also, we are competing with the world. The global competitiveness index has improved. Our logistics performance has also improved. Global innovation, we have jumped at least 40 points, 41 places in 7 years. And now we are 40th, ranked 40th in the world. Now, I wish that we are in first 10, and that will happen very soon. And the rising economic influence of Asia as compared to the West, that's already noticeable. If you look at the demographic advantage which we have, right now, India has 37 years of window. 37 years. You can see this. 37 years by 2055, nobody is able to compete with us till 2055. Now, if we are able to skill our people, we will reap the demographic dividend. Otherwise, it could be a big problem for us. India is going to be the future provider of skilled manpower to the world. I was looking at the US Census 2020, which said only India has 47 million plus people who could be trained and deployed across the globe. While most of the other developed economies, their population is going down. You may bring AI, you may bring anything, but wherever you need hands, you cannot place them. So you have to have those hands. Now look at the kind of digital public infrastructure we have. You have Aadhaar, you have bank account, you have mobile. This figure, 15.76 lakh crore
This is this August 2023. That means in 1 year, we are transacting almost 16 lakh crores. And in 1 year, we'll transact 190 lakh crores. Our total annual budget, which was passed last year, is about 40 lakh crores. So we'll turn that budget over and over again, more than 4 times, 4.5 times. Look at the velocity of business it is creating. Look at the positivity, the growth it is bringing. Firing huge growth in every sector. The Honorable Prime Minister wants India to be the skill capital of the world. India has capable youth with skills, values, and passion and honesty. ये प्रधानमंत्री जी के अपने शब्द हैं. So India's skill capital can become the engine of global growth, not only Indian growth. Mind it. वसुधैव कुटुंबकम. सबका भला चाहते हैं हम. Since we are talking of 2047, let's look at the factors which are impacting and influencing the future of work and the skills required for accomplishing that work. There are underlying drivers like connectivity, machine capabilities, demographies, social expectations. Then there are economic structures which are changing fast, modularization, globalization, productivity, value propositions. Similarly, workforce displacement. You have remote work, we saw it in COVID, work management, crowdsourcing of work, gig workforce, then worker placement through automation. And then there is emerging landscape. We are not very sure about this landscape, but one thing we are absolutely sure is education and skills. So we need future skills and we need blended learning. We need upskilling, we need reskilling, we need skilling. So broadly, if you look at it, there is impact of technology, there is impact of globalization and now localization, there is changing demography, job losses and employment only for highly skilled workers, then skilling and lifelong learning, gig workforce and its social protection, increased gender diversity and climate change. Muta-muti, all these factors are impacting the kind of new courses which we run, the way we design our courses, the way we run our courses. All of you are aware of Industry 4.0, that is cyber physical systems, where you have Internet of Things, networking and machine learning, which is being now replaced by Industry 5.0, which is human-robot collaboration, cognitive systems and customization. And India is the fittest economy to adopt Industry 5.0. Because the best part in Industry 5.0 is that manpower, which was distanced from the factories in 4.0, comes back to the factories in 5.0. The focus on delivery, customer experience, hyper customization, then responsive and distributed supply chain, experience activated, that is interactive products. So instead of 4.0, now we are concentrating on 5.0. You want to be ahead of the curve now. There is no question of missing the bus. And there are top technologies, and I was just looking at this entire spectrum of 24 strategic technologies brought out by
Gartner, they bring out top 10 technology every year. Now, most of these technologies we Indians are working very closely with. And that gives me a very positive feeling. And I would like a very advanced state like Maharashtra to take up few courses in these areas. At least a semester-long programs can be started, or short-term skilling can be started. Because every year this is subject to change. We need to establish our own AI models. We need to create our own training of those models. We need to have our own language models. No, whatever language model we are working with right now is a Western model. Now we have 22 Bharati Bhashaएं, and the difference between the script of those or the sounds of those is very little. If we work it out for one language, that can be replicated for other language with suitable changes. But those changes are not very big. They are minimal. Coming to the education and skilling ecosystem. Now we have a large skilling ecosystem. 26.5 crore students in schools, 4.15 crore students in higher education. Almost 11 crores are going through skilling, or they have passed out. They are alumni network of skilled workers. 47 crore workers, they are already there in the system. And you can verify their numbers through these national databases. They are verified workers. And there are 26 crore people who are not in education, employment or training. We call them NEET. Now these students, these people, these youth, they are the point of worry for us. Unless we skill them, we will not be able to reap full demographic dividend. So we have to have programs for catering to these 26 crore people. And if you really look at it, almost 15 lakh schools, 1.55 lakhs, 10 plus 2, 1.4 to 10th class, 1100 plus universities, 43,000 plus affiliated colleges, and almost 9,000 AICTE approved institutions, about 4,000 polytechnics. And in higher education also we have more than 15.51 lakh teachers, while in school education we have 95 lakh teachers. So if we want to implement the new policy, we'll have to upgrade all our teachers. And this ecosystem, we just recall the old ecosystem where we had only the student, the teacher, the institution and the parents. 4 लोग होते थे. अभी 4 नहीं है. अभी there's a huge number of stakeholders in the entire ecosystem. And we have to work with all of them. We have to have a relationship. We have to make them understand our policies. We have to work with them. Only then we can take it forward. Now there are policies and frameworks which I call constructively disrupting both the education and skilling ecosystem. You have NEP, which stands on the foundational pillars of access, equity, equality, affordability and accountability. Then you have National Credit Framework, which is the implementation of NEP. It basically creditizes all kinds of learning, and it integrates credits which you could have obtained or which you obtain from academics, from skills and from experiential learning. And these credits can then be converted into a certificate, a diploma or a degree.
Other important factor is integration and embedding of vocational education and skilling into school and higher education. It is basically integration and embedding. It is not one additional subject. You actually subject skills into every subject. For example, in computer science engineering, suppose we are teaching operating systems. So you teach in theory class. In the practical class, you say, all right, which OS would you like to learn? Would you like to learn Windows OS? Or would you like to learn Android or iPhone? So they actually work with those skills. They develop those skills. तो प्रैक्टिकल आपने लैब जो है वो स्किल में कन्वर्ट कर दी. उसके लिए whether you talk to Microsoft or you talk to Google, talk to IBM, talk to Apple, you can bring them. Then you have the National Higher Education Qualification Framework, National School Education Framework, which is called National Curriculum Framework, and the National Skill Qualification Framework. So these frameworks, they are there to develop your course curriculum which are in alignment with NCrf and which have the spirit of the National Education Policy. These curricular framework, especially the NCrf for the university, is a now changed commodity. The other framework, NSQF, has been around since 2013. This framework was notified by the Ministry of Finance, Government of India, after consulting all the departments. This is not by NCVT. But NCVT has now modified this framework to align with NCrf and NEP. And on 6th June, the revised version has been notified, which has the level descriptors of skills. Similarly, there are level descriptors which have been defined in the National Higher Education Qualification Framework, which were earlier not there. NCF has also been notified now, and NCF has number of components. There are 4 groups, and within these 4 groups there are 8 subgroups. I am sure you would have already gone through the provisions. I may discuss little detail of that. Then you have online, digital and blended learning possibilities. Today our GR in higher education is about 27%. We want to achieve up to 50% by 2035. That means whatever infrastructure in education we have created in the last 75 years, we have to replicate that infrastructure in next 12 years. Is that possible? Is it possible to create those kind of resources? The answer is no. That means we have to use technology. And for using technology, we need online, digital and blended learning. Also, we need education and skilling in the emerging and future technology areas, because we want to supply manpower to the world. We want to be the back office of the world. And then future skills, employability skills, soft skills, life skills for handling future of work. We work with all 60 sectors. There are 60 sectors of economy, including defense forces, including police, including legal and judicial services. So there are 60 sectors, and we work with all 60 sectors. And we are looking at the future of work in each one of these 60 sectors. 5 साल बाद क्या स्वरूप होगा, कौन सी जॉब्स चली जाएंगी, कौन सी जॉब्स नहीं आएंगी, वो सब का अंदाजा लगा के उसका फैसला करके उसके मुताबिक आज उसको कैसे करिकुलम में इंटीग्रेट करना है, दैट इज व्हाट वी आर लुकिंग एट. The National Curriculum Framework, basically created by all the regulators and the ministries, it enables integration and characterization of all learnings
that is academic education, both school and higher education, vocational education, and skills and experiential learning. It allows an approach that is multidisciplinary, holistic, and learning outcome based, subject to assessment. It removes any distinction between science, social science, humanities, allows horizontal and vertical mobility, enables multiple entry, multiple exit options, equivalence between general and vocational education, and it works, it aligns completely with the three frameworks which I just talked about, enables assignment, accumulation, storage, transfer, and redemption of credits, also lends hand to internationalization of education and international equivalence of various subjects. This is one of the most important concepts which I want to explain. On the x-axis you have academic axis, we call it, you have academic education. On the y-axis you have skill education. On z-axis you have experiential learning. And for your degree, diploma, certificate, you can take credits from all three, put them together, and convert that into a degree or diploma. And how do you actually convert it together is given in your qualification framework. How much credits to be taken from which area? What weightage to be given to this particular area? All that is part of your qualification framework. So 1200 hours of learning per year is presumed. 40 credits per year, that means 30 hours per credit. Maximum you can have even 44 or 48 credits per year. So 20 credits per semester, that is minimum. Up to 50% credits you can earn from the skill-based courses. And assessment is mandatory for earning credits. So if you want to earn credits, you have to first define that this is what I'm going to teach, this is the learning outcome. Based on the level descriptors for these learning outcomes, the one must know all this by the end of the course. This is the outcome. So you define the outcome, you define the NCrf level. Whether that level is 4.5, the UG first year, 5 is UG second year, 5.5 is UG third year, 6 is UG fourth year. So BTech हो गया यहाँ. फिर यहाँ MTech है. अगर नॉर्मल BA है तो 5.5 पे BA खत्म होगा, 6 पर BA MA फर्स्ट ईयर है, 6.5 पे MA सेकंड ईयर. तो किस लेवल पे उसको कोर्स देना है? So that should decide, and then you notify that before starting the course. Once you have done that, after the course you assess the person. If he has achieved the learning outcome, he gets the credit. आप किसी चीज के लिए भी क्रेडिट दे सकते हो. Similarly, for skill education, if you look at it, you see the entry levels are varied. At level 1, no education prescribed. Maybe level 2, maybe 5th class or read write plus some experience. Similarly, level 2.5, 3, 4, if you see 12th pass, 3 is 10th pass. Similarly, there are courses for UG, PG, even PhD. So these skill courses can be integrated with UG programs, with PG programs. So that can be done. And for learning, you can have all kinds of learning. You see the wide spectrum of the possibilities, what you can teach. अभी नहीं है कि सिलेबस में नहीं है तो नहीं पढ़ाया. सिलेबस आपने बनाना, आपने डिसाइड करना. क्लासरूम टीचिंग, लैब, क्लास प्रोजेक्ट्स, असाइनमेंट्स, vocational education, technical education, skilling, project work, field visits, attachments, online, digital, blended learning, internship, apprenticeship, experiential learning. Similarly, your examination, your quiz, assessments, all these hours are counted towards learning hours. 1200 घंटे में ये भी included है. Sports and games, if you are national, international achiever, how to convert those into credits. Then physical activities, performing arts, fine arts, yoga, handicraft, social work, community work, shramdan, all that can be part of skill. National Higher Education Qualification Framework,
I'm sure you would have gone through it. So level 4.5 to level 8. 4.5 is UG certificate, 5 is UG diploma, 5.5 is bachelor's degree, 6 is bachelor's degree with honors. And then you have PG diploma, first year of second year masters. Level 6.5 is master's degree 2 years, after 3 years bachelor's, or first year after 4 years of bachelor's degree. And then 7 is MTech second year, 8 is doctoral. And these are the learning outcomes as you find them in the level descriptors. Now, if you're really interested, I'm not going to go into details. The major provisions already notified as part of NCrf. Now, the sections and the tables are given which relate to the NCrf document, which is there on the UGC website. One can access that. Similarly, the other guidelines of UGC which apply in this case, and these guidelines are readily available. We are making it part of the SOP as well. Similarly, there are NCVT guidelines as well, which, as I told you, the National Skill Qualification Framework. Then guidelines for recognition and regulation of awarding bodies, guidelines for blended learning, then guidelines for development approval, usage of the NOSES, the macro credentials, etc. Now we have gone to nano credentials as well. And then creditization of skilling and training courses being offered by the multinational companies. Now you will be able to integrate these standard courses of the industry which are available from Oracle, Microsoft, IBM, Salesforce. Those could be integrated as part of your curriculum. Those could be creditized. तो ये already शुरू कर दिया है. बहुत सारे courses हो गए. Some of them are coming to NCVT to become the awarding body at the national level. For example, Microsoft has already come, IBM has already come, और Microsoft का almost approved है. 4200 courses हैं, 4200 courses absolutely free of cost. Certification का उसका अलग है, और certification is by third party. वो भी internationally जो best person है, only he will certify. Assessment agency would certify, and that has a lot of international value. So it can become part and parcel of your curriculum. So assignment of credits, you have credit assignment, credit accumulation, credit storage, credit redemption and credit transfers. तो इसका जो सारा provision है कैसे होगा, credit storage for example, you have to have ABC registration, and then within that for the institution you have to have registration of the student. APAR, अभी APAR आएगा, अभी इसको ABC registration ही कह रहे हैं, but ultimately this is going to be APAR. तो ये APAR ID आएगी, मिलेगी बच्चे को. सो रिडम्पशन जब करना है तो ABC में से निकाल के इसको सर्टिफिकेट डिप्लोमा डिग्री में कन्वर्ट करना है. एंड देन ट्रांसफर will be used for multiple other options, multiple entry exit, flexibility in choosing career trajectories, establishing entry criteria, lifelong learning. आपने आज एक कोर्स कर लिया, 2 साल बाद दूसरा कर लिया, फिर तीसरा कर लिया. अगेन देयर इज अ वैलिडिटी. आपने आज एक चीज़ सीखी, हो सकता है उसकी वैलिडिटी यूजीसी मानता 7 साल, एनसीवीटी कहता है कि नहीं 7 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, लाइफ लॉन्ग भी हो सकती है. आपने साइकिल चलाना सीखा, आपने स्विमिंग सीखी, तो उसकी तो कोई वैलिडिटी नहीं है. साइकिल चलाना, स्विमिंग तो लाइफ लॉन्ग है. आपने लैंग्वेज सीखी, लाइफ लॉन्ग है. तो इस तरह से हमारा जो टेक्निकल वट एवर वी डू स्किलिंग इन टेक्नोलॉजीज, द एक्सपायरी इज 3 years, बिकॉज एवरी 3 years थिंग्स चेंज. तो इसमें हायर एजुकेशन में कैसे इसको इम्प्लीमेंट करना है. नो, आई डोंट वांट टू रियली गो इनटू details of this, but I'll tell you the basic fundamental. Basic fundamental is up to 50% credits you can earn from skill education, and you can freely offer skill based courses
You can integrate with your UG, PG programs, your diploma programs. Even in art subjects, you can integrate skilling. बहुत आराम से कर सकते हो. तो ये skill courses could be designed either under National Higher Education Qualification Framework, or you can pick up a course from the National Skill Qualification Framework. अगर यहाँ से कोर्स आप उठाओगे वो इसके गाइडलाइंस के हिसाब से चलेंगे. अगर आपने NSQF का कोर्स उठाया तो NSQF की गाइडलाइन के हिसाब से चलेंगे. इतना ही फर्क है. Now, if you pick up a course from NSQF, you have to make it part of the curriculum, and that curriculum would need approval from your highest academic body. Once that is approved, you need not come to NCVT. You can run that course as an integral part of the curriculum. अगर थर्ड पार्टी के लिए स्किलिंग रन करना है, यू नीड टू कम टू एनसीवीटी. फिर एनसीवीटी का अवॉर्डिंग बॉडी बनना पड़ेगा. मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज आर डूइंग दैट. दे आर इंटीग्रेटिंग ऑल्सो एंड दे आर ट्राइंग टू वर्क एज ए थर्ड पार्टी स्किलिंग इंस्टीट्यूशंस. तो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. एनी इंस्टीट्यूशन, एनी यूनिवर्सिटी, एनी कॉलेज through their university can become the awarding body of NCVT. So इसमें if you want support from the awarding bodies of NCVT for instructions, for course curriculum, material, for labs, no, that can be given. Not a problem. कोई दिक्कत नहीं है उसमें. अपना कोर्स आप डिजाइन करना चाहते हो HEI में स्किल का, यू कैन डिजाइन, यू कैन सर्टिफाई, बट दैट कोर्स विल हैव टू बी एज पर नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क. ऑल्सो स्किल इंडिया लोगो इज मैंडेटरी. जो NHEQF के मुताबिक कोर्स है या NSQF का कोर्स है, उसमें ये स्किल इंडिया लोगो लग सकता है और लगना है. और इसमें जितने स्किल बेस्ड कोर्सेज हैं, दे विल हैव टू बी पॉपुलेटेड through the Skill India Digital SID. Now I would say all of you to look at your phones, go to the Play Store, download this application called SID, Skill India Digital, और इसको इंस्टॉल कर लीजिए. This will give you the overall journey of every student. क्या है आज वो क्या करना चाहता है, उसको कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं, कहाँ से वो कोर्सेज करे, कितने उसको क्रेडिट्स मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, सरकार की कोई स्कीम है या नहीं है. एवरीथिंग इज इंटीग्रेटेड इन SID. तो आप जो भी अपनी स्किलिंग कराते हैं उसको आप दो तरीके से SID पे डाल सकते हैं. एक तो या तो SID पे जाके रजिस्ट्रेशन कर दें, एक SID की तरफ से दे आर ऑल्सो क्रिएटिंग सम काइंड ऑफ एन API. सो व्हाटएवर डेटा यू हैव, द स्किलिंग रिगार्डिंग डेटा विल हैव टू बी पॉपुलेटेड ऑन SID. और SID से सर्टिफिकेशन भी हो जाती है, सर्टिफिकेट भी निकल आता है वहां से. Similarly, as I told you, somebody wants to run NSQF courses independently, they will have to become the awarding body of NCVT. One example, कि आप स्कूल में अगर आपने स्किल कोर्सेज शुरू करने हैं तो उसमें स्किल कोर्सेज में क्या क्या आप एडिशन करा सकते हैं, ये उसमें करा सकते हैं. इसी तरह से हायर एजुकेशन में आप क्या एडिशन करा सकते हैं. तो करिकुलर स्ट्रक्चर में इट कुड बी लेक्चर प्लस प्रैक्टिकल, और लेक्चर्स प्लस प्रैक्टिकल प्लस प्रोजेक्ट वर्क, और प्रैक्टिकल प्लस प्रोजेक्ट वर्क, OJT, और इंटर्नशिप 6 months, 3 months, 2 months, और अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड प्रोग्राम्स, डिग्री प्रोग्राम्स, डिप्लोमा प्रोग्राम. ऑल दैट इज पॉसिबल. बच्चा 1 साल पढ़ा, 1.5 साल पढ़ा, फिर 1.5 साल जाके काम कराया, फिर लास्ट ईयर में फिर आ गया, या आपने उसको 3 साल पढ़ाया, उसको लास्ट ईयर अप्रेंटिसशिप पे भेजा, वहीं से अब्जॉर्ब हो गया. वो लास्ट ईयर में इंटर्नशिप पे भेजा, वहीं से अब्जॉर्ब हो गया. आप सब कुछ कर सकते हो. एवरी पॉसिबिलिटी इज देयर नाउ. अगर UGC का 4 year UG प्रोग्राम है, 3 साल वाला, 4 साल वाला, 120 क्रेडिट्स, 160 क्रेडिट्स, इसमें से मेजर कोर सब्जेक्ट्स इसमें 60 है और माइनर के 12-12 के 2 हो सकते हैं,
24 माइनर के हो गए, मल्टी डिसिप्लिनरी 9, एबिलिटी इन्हांसमेंट 8, स्किल इन्हांसमेंट 9। ये स्किल इन्हांसमेंट ये सॉफ्ट स्किल्स का है। वैल्यू एडेड कोर्सेज हो सकते हैं, इसमें समर इंटर्नशिप हो सकता है। इसमें से अप टू 50% could be from skill based courses. इसमें से these may also be skill based courses. These can be employability and skill based courses. तो आप ये देख लीजिए, और ये टेबल जो है ये चेयरमैन यूजीसी के साथ बैठ के बनाया है, तो इसमें कंफ्यूजन की गुंजाइश नहीं है। Now we were discussing about the skill university and the general university. इसमें रेगुलेशन ओवरऑल यूजीसी का है, प्रोग्राम इसमें मल्टीडिसिप्लिनरी चल सकते हैं। इसमें प्राइमरली आपको वोकेशनल प्रोग्राम्स ही चलाने पड़ेंगे, स्किल प्रोग्राम चलाने पड़ेंगे। इसमें परसेंटेज ऑफ स्किल प्रोग्राम इसमें एज पर यूजीसी नॉर्म्स जो दिया हुआ है, इसमें मिनिमम 50% हैव टू बी स्किल बेस्ड प्रोग्राम्स, और इसमें 25% इंटरडिसिप्लिनरी है, 50% जो है स्किल बेस्ड प्रोग्राम हो सकते हैं। इसमें 60 to 70% स्किल कंपोनेंट प्रोग्राम का होना है स्किल यूनिवर्सिटी में। इसमें मिनिमम एडमिशन 10+2 है, इसमें मिनिमम एडमिशन 10th है। इसमें ये फर्स्ट ईयर यूजी सर्टिफिकेट, देन डिप्लोमा, सेकंड ईयर देन यूजी डिग्री एंड डिग्री विद ऑनर्स। इसमें 10th के बाद 10+2 इज ITI, ITI plus 2 years is diploma, diploma plus 1 year is UG degree, and diploma plus 2 years is UG degree with honors. Again, this table is the agreed table of all these stakeholders, including all 4 regulators. We sat together, we worked it out, we have already approved this. Similarly, skill courses up to level 4.5 and above, जनरल यूनिवर्सिटी, जबकि स्किल यूनिवर्सिटी में ये 3.5 above के जा सकते हैं। तो इसमें इवन डिप्लोमा लेवल की गाइडलाइंस AICTE की हो सकती हैं। डिप्लोमा कोर्सेज अभी NCVT ने भी शुरू किए हैं, सो यू कैन हैव दोज कोर्सेज एज वेल। नॉर्म्स जो हैं यूजीसी, जो NHQF के कोर्सेज हैं उनके लिए UGC रेगुलेशन, NSQF कोर्सेज के लिए जो NSQC अप्रूव्ड क्वालिफिकेशंस, इंटर्नशिप, OJT, अप्रेंटिसशिप सब इसमें चलेगा। NAC के लिए इसके वी आर मेकिंग डिफरेंट स्टैंडर्ड्स फॉर NAC and NBA for this. No, a committee has been constituted. I am chairing that committee. So we are in the process of just finalizing. तो इतना कुछ उसमें बदलाव कर दिया कि इसको देख के उन्होंने इसमें भी बदलाव किया। इतनी चीजें उसमें नई आ गई हैं NCrf उसके आने से कि वो कई बार होता था कि इसमें डेटा से धोखा खा जाते हैं हम लोग, तो अब डेटा से धोखा नहीं खाएंगे, तो उसमें भी कॉम्प्रिहेंसिव बदलाव हो रहे हैं उसमें। तो ये मैं बता रहा था, अगर आपको एक्सेप्शनल स्टूडेंट्स के लिए उसको कैरेक्टराइज करना है, उसका प्रावधान भी है। ओलंपियाड्स कराने हैं, हैकाथॉन करानी है, उसका प्रावधान है। स्लो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी जगह है, और रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग के लिए भी जगह है। सिमिलरली जो NSQF है, ये 4.5 के बजाय लेवल 1 से लेवल 8 तक है। लेवल 1 से 4 तक स्कूल एजुकेशन के साथ भी इंटीग्रेट हो सकता है, लेवल 4.5 से 8 तक हायर एजुकेशन के साथ भी इंटीग्रेट हो सकता है। आधे कोर्सेज आप यहाँ से उठा लें, आधे आप NHQF से उठा लें, डिग्री हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसमें भी दीज आर द लेवल डिस्क्रिप्टर्स, दीज आर 5 लेवल डिस्क्रिप्टर्स: प्रोफेशनल थियरी, theoretical knowledge, professional and technical skills, that hands-on experience, then employment readiness, entrepreneurship skills and mindset, that is the third one. Fourth is broad learning outcomes, and fifth is the responsibility level. इसको अगर आप मैं दिखाऊं तो ये इस टाइप का दिखेगा। लेवल 4.5 पर ये प्रोफेशनल नॉलेज में उसको क्या होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग जो है उसकी, फिर उसके हैंड्स ऑन स्किल है, उसमें आप किस टाइप की स्किल्स उसके पास होनी चाहिए, जो एम्प्लॉयमेंट रेडीनेस है उसकी, उसका माइंडसेट है, उसकी सॉफ्ट स्किल्स है, उसमें ये सारा कुछ है। इसमें ये कम्युनिकेशन, डिजिटल, फाइनेंशियल एंड लीगल लिटरेसी, एंटरप्रेन्योरशिप,
इंक्लूजन, डाइवर्सिटी, सब इसमें आता है. देन जेनरिक लर्निंग आउटकम्स आती हैं एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी लेवल्स फॉर द जॉब आते हैं. तो ये जैसे 4.5 to 5 के लिए है. सो ऑन वन साइड यू हैव 8 एंड ऑन द अदर साइड यू हैव 5. सो 8/5 की टेबल है. लेकिन अगर आप इसको ये 4.5 और 5 उस तरह से जाके देखेंगे तो 13/5 की टेबल बनती है और इसमें सारे लेवल डिस्क्रिप्टर्स हैं. एंड दीज लेवल डिस्क्रिप्टर्स वुड एक्चुअली डिसाइड एज टू व्हाट लेवल ऑफ टीचिंग इज दिस. We have to get used to it. This is the international standard. As far as skilling is concerned, the NCVT has already adopted the National Credit Framework. We have notified the National Skill Qualification Framework in line with NEP and NCrf. Then emerging and future technologies, we are working very closely. We have now more than 340 future skills qualification which have been approved. These qualifications have been created by the industry leaders. They are available on NQR. You can pick up these. Cross-sectoral and multi-sectoral skill guidelines have been notified. Blended learning guidelines have been notified. Employability skills have been notified. Though I am working on the second part of these employability skills, we have identified all these skills into 150 micro skills. Employability skills, soft skills and life skills, and these 150 then have been clubbed into 48 और उसको इकट्ठा करके उसको उसकी 9 बना दी. I'll come to that little later. And then you have international alignment and mobility. Similarly, you can create a single NOS, a micro credential or even nano credentials. Then creditization of the MNC courses. Now that has been done. Training of trainers and training of assessors. Then diploma and advanced diploma in skill education and comprehensive employability skills and competencies for future of work. Blended learning के लिए detailed guidelines हैं. तो हम लोग जो learning है that is we divide into 7 components. Theoretical part, the soft skill part, the demonstration part, the practical hands-on work, the tutorial assignments, the assessment, evaluation and examination, and apprenticeship, internship and on-the-job training. And we define online versus offline for each one of these 7 components separately with the use of technology. So every qualification which is approved has this table. It's embedded in every qualification. And it's up to you, the proposer of the qualification, to say that all right, so much percentage we will go online and so much would be offline. But for all hands-on work, at least 50% has to be physical. That is for sure. And if you want to go online, it has to be through LMS. No other way. Similarly, recognition of prior learning, we have absolutely detailed guidelines. Detailed guidelines are there. I can recognize prior learning for anyone. Here the key is assessment. Who is assessing? बहुत ज़रूरी है. एक कारपेंटर की स्किल को मैंने असेस करना है, मैं उसको हायर लेवल देना चाहता हूँ 4.5. ही से मैं लेवल 4.5 का हूँ. उससे कहा भाई ये लकड़ी पड़ी है, इसमें से लकड़ी चूज करो, रॉकिंग चेयर बना दो. यू हैव 2 days. अगर रॉकिंग चेयर बनाता है, परफेक्ट बनती है, तो आप उसको लेवल 4.5 दे सकते हैं. एक पर्सन आता है कि मैं मैकेनिक हूँ और बड़ा टॉप का मैकेनिक, उससे आपने बोला कि भाई मारुति खड़ी है, इसका इंजन पूरा खोल के दोबारा बांधा. खोलता है, बांधता है, 3 दिन लगते हैं, 4 दिन लगते हैं. You can give him that certification. Why not? He knows it, he understands that. उसके बाद आपने उसको मौखिक प्रश्न पूछने, आप पूछ ले. हो सकता है वो पढ़ा लिखा ना हो, कोई बात नहीं. But if he knows the job, he can be given these RPN. This I was talking about creditization of courses of all MNCs. तो इसमें ये सारे MNCs के कोर्सेज आपके करिकुलम का पार्ट बन जाएंगे और आपकी जो मैन पावर है वो ग्लोबली जो बेस्ट मैन पावर से अलाइन हो जाएगी. दोनों चीज़ें होंगी.
So that is why we never wanted to leave it outside. So this could include multinational companies, original equipment manufacturers, original design manufacturers, value added resellers और leading in Indian industries. और इसके लिए there are three options. One, they could bring their qualification through one of the existing awarding bodies, or they can directly submit their qualification as reputed industry to NCVT. But in that case, those qualifications would be owned by NCVT and they would be available to the entire ecosystem for implementation. Third is that they become the awarding body by themselves. In that case, they'll have to follow the guidelines of NCVT as far as qualifications are concerned. In any case, the qualification has to be in the national template. वो उसमें आता है. And then there are certain preconditions. $2 billion से ऊपर की कंपनी है, उसके क्वालिफिकेशन अप्रूव करते हैं. ऐसे नहीं कि कोई आ जाए कर दो. They should be able to create substantial jobs. अगर उसकी अपनी टेक्नोलॉजी है, अगर वो अपनी नई टेक्नोलॉजी उसने बनाई है, उस पर काम करता है, उसको कर सकते हैं. लेकिन अगर कोर्सेयर आ जाए कि आप हमें कर दो, उनको नहीं कर सकते, बिकॉज दे आर नॉट क्रिएटिंग एनी न्यू टेक्नोलॉजीज, दे आर जस्ट सेलिंग कोर्सेज, सो दे कैन नॉट बी पार्ट ऑफ दिस. Okay, so that's what I was saying. Pure educational technology companies, they are outside the scope of these guidelines. The NCVT has till date approved more than 7,000 qualifications, out of which 4,678 qualifications are live. You can see these are the NOSes and these are the micro credentials जो नीचे लिखे हुए हैं. अभी माइक्रो क्रेडेंशियल्स अप्रूव करने शुरू कर दिए हमने. माइक्रो क्रेडेंशियल इज अ वेरी स्मॉल कोर्स अप टू 30 आवर्स, मैक्सिमम 30 आवर्स. 30 घंटे का हो जाए, 15 का हो जाए, 7.5 का हो जाए, 22.5 का हो जाए. अगर नैनो पे जाना है तो 1 से 2.5 घंटे का कोर्स हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं. और इसमें से यू कैन सी दीज हैव बीन आर्काइव्ड. 2520 have been archived. 3 साल पूरे हो गए, वो ठंडे बस्ते में चला गया. ठंडे बस्ते से निकाला जा सकता है. somebody wants to offer these courses, you again validate the course कि अभी इसमें कुछ चेंज तो नहीं हुआ, and you run that course. So then you have interplay of contemporary, new age and future skills. You need all these three. You need contemporary skills, new age skills as well as future skills. Now these are being integrated with every course curriculum in skill education. That's what we are doing. ये 9 boxes की मैं बात कर रहा था. Communication skills, interpersonal and social skills, cognitive and metacognitive skills, language skills, workplace, job related skills, foundation literacies, citizenship and constitutional values, green skills and entrepreneurship and startup skills. ये 9 skills जो हैं ये हमने की हैं. ये मैंने जो बताया आपको, जो छोटे पार्ट थे जिनको मिला के ये बनाया है. पहले 150 था, उसमें से 107 निकाला, उसमें से भी 48, इसको 48 कर दिया. अभी पढ़ा नहीं जाएगा, फोटो मत खींचो, मैं भेज दूंगा. ट्रांसडिसिप्लिनरिटी है, नोवल अडैप्टिव थिंकिंग है, डिजाइन थिंकिंग है, कंप्यूटेशन थिंकिंग, न्यू मीडिया लिटरेसी, कॉग्निटिव लोड मैनेजमेंट, वर्चुअल कोलैबोरेशन, क्रॉस कल्चरल कॉम्पिटेंसी, social intelligence and speaking. These are some of the skills required for new age work. और ये this is basically combination of many of these skills mentioned here, not one, combination of many. So that is how we are creating these. इसमें कुछ IT skills हैं जो अभी तक कोर्सेज में इंटीग्रेट कर दी गई हैं, एसेंशियल कॉम्पिटेंसीज हैं जो कोर्सेज में इंटीग्रेट की गई हैं. नाउ अनदर वे ऑफ लुकिंग एट एनी ऑफ दीज स्किल्स, डिजिटल फ्लुएंसी की मैं बात करनी है, तो इसमें अगर मैं देखूंगा तो इसमें बेसिक डिजिटल लिटरेसी एक कोर्स है जो लेवल 1 पर है. ये
फिर यूनिवर्सल डिजिटल प्रोफिशिएंसी में क्या क्या आएगा, फिर टेक फ्लुएंट डिजिटल प्रैक्टिशनर्स क्या क्या आएगा उसमें, एंड फाइनली जो डिजिटल पाइनियर्स हैं उनके लिए क्या आएगा. और देन देयर कुड बी क्रॉस सेक्टोरल कोर्सेज, क्रॉस सेक्टोरल डिजिटल लिटरेसीज विच विल क्रॉस विद अदर टेक्नोलॉजीज, वो क्या आएंगी. तो इसमें इस टाइप के मैप्स हम हर टेक्नोलॉजी के लिए क्रिएट करते हैं. दिस जस्ट एन एग्जांपल. ओके, नाउ यू सॉ किसके साथ क्रॉस हो सकता है. नो, दीज आर द 10 बेसिक टेक्नोलॉजीज जो which are fundamentally changing the world. AI, big data, cloud computing, Internet of Things, blockchain, cyber security, social and mobile, robotic process automation, then augmented reality, virtual reality, 3D printing. और ये किसी भी सेक्टर के साथ क्रॉस कर सकते हैं. They are impacting all these sectors. And we have to find out how fundamentally the future of work is changing. अब अभी हर सेक्टर को जैसे हमने बोला है कि आने वाले 3 महीनों में आप 5 नई क्वालिफिकेशन बना के लाइए बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल. So you have sub areas of industry 4.0, you have indicative sectors where industry 4.0 is integrated. इसमें ऑटोमेशन, एविएशन, कैपिटल गुड्स, ITI, TES, इलेक्ट्रॉनिक्स, एग्रीकल्चर, हर जगह पे इंडस्ट्री 4.0 आता है. इंडस्ट्री 4.0 का मतलब मैन्युफैक्चरिंग नहीं है. और डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्वालिफिकेशंस जो इससे क्रिएट होती हैं, जॉब रोल्स जो आ रहे हैं, जो इंडस्ट्री मांग रही है. Similarly, AI is impacting lot of areas, lot of job areas. वो कैसे इम्पैक्ट कर रही है, कहाँ वो ज्यादा जॉब्स क्रिएट कर रही है, कहाँ उसकी वजह से जॉब्स जाएंगे, उसको भी एनालाइज करते हैं. एनालाइज करके इसमें अब आगे क्या करने की जरूरत है उस पर काम करते हैं. AI के बारे में मैं एक चीज कहनी चाहूंगा कि AI से इंडिया को डरना नहीं है. AI में इफ यू सी, दिस इज अ मैट्रिक्स, दिस इज परसेंटेज चेंज इन टास्क प्रोडक्टिविटी पर एम्प्लॉय, दिस इज लो, दिस इज हाई, एंड दिस इज जॉब डिस्प्लेसमेंट रिस्क, लो रिस्क एंड हाई रिस्क. तो जॉब किसकी जाएगी? जॉब उसकी जा सकती है जो लो डिस्क्रिप्शन जॉब है, जहां उसको AI से रिप्लेस किया जा सकता है, ऑटोमेट किया जा सकता है. जो भी प्रोसेस ऑटोमेट किया जा सकता है वहां लो डिस्क्रिप्शन है, दिमाग नहीं लगाना है. तो उसमें तो आपको इमीडिएटली इन लोगों को तो रीस्किल करके शिफ्ट करना पड़ेगा. दूसरा है इवॉल्विंग सेक्टर, मॉडरेट डिसरप्शन 20 to 50%, मीडियम डिस्क्रिप्शन, डोमेन फंक्शनल स्पेशलिस्ट एंड IT डेवलपर्स, इनके लिए अभी समय है. थर्ड इज कोएग्जिस्ट, हाई डिस्क्रिप्शन, प्रोजेक्ट मैनेजर्स, डेटा साइंटिस्ट, IT आर्किटेक्ट्स, लीगल एडवाइजर्स, रेगुलेटरी कंप्लायंसेस. ये जॉब्स इतनी आसानी से जाने वाले नहीं है. कुछ जॉब्स हैं विच विल एंड्योर वेरी हाई डिस्क्रिप्शन, ह्यूमन स्किल डेवलपमेंट, रिसर्चर, सर्जन्स, प्लम्बर्स, कोर इंजीनियर्स. तो इसमें ह्यूमन स्किल डेवलपमेंट आप लोग सेफ हैं. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हमने किस किस एरिया में काम करना है, कैसे काम करना है. Also, we are starting a program wherein we are saying AI for all. इसमें अवेयरनेस क्रिएट करना है. AI क्या है, AI से डरने की जरूरत नहीं है. AI को कैसे कहाँ कहाँ लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, ये 1 मिलियन का टारगेट है इसका. देन बाय मेनी, AI फॉर मेनी, इसमें यूजर्स फॉर जनरेटिव AI फॉर हाई प्रोडक्टिविटी, कैसे इसको यूज करना है, डिफरेंट सेक्टर्स में कैसे यूज करना है. इसका टारगेट है कॉलेजेस, ITI, पॉलिटेक्निक, स्कूल्स, वर्किंग प्रोफेशनल्स, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स. ये 20 मिलियंस का टारगेट है. तो इसमें अब महाराष्ट्र देखिए, महाराष्ट्र कितना करना चाहता है. महाराष्ट्र वुड लाइक टू लीड. और देन फॉर फ्यू वर्ल्ड क्लास सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, डिजाइनर्स एंड आर्किटेक्ट बेस्ड ऑन AI. तो ये इंजीनियरिंग कॉलेजेस, STEM एंड टेक्निकल प्रोफेशनल्स 1 मिलियन. तो ये हमने सारी दुनिया को देने. AI के ऊपर भी सिमिलर वे में वी हैव क्रिएटेड बेसिक AI अवेयरनेस, यूनिवर्सल AI प्रोफिशिएंसी, AI
practitioners, AI pioneers, and then cross-sectoral. And then for different levels, we have created these courses. These courses are already in place. They are available on NQR. One can just pick up these courses. ये हमारे देशमुख जी हैं. ये आजकल NCVT में जब से आए हैं बड़ा सोचते हैं. तो I am very impressed, Dr. Deshmukh, that you are thinking on these scales, whether in construction or whether in other areas. What is the future of technology? What is the future of skilling? What is the future of development? Everywhere we could use these new technologies. Future of energy पे हम लोग काम कर रहे हैं अभी. We are creating a national strategy, and Dr. Deshmukh is very much part of that group. What we are doing, we have identified in the energy sectors what are various areas where we can work, and for each sector, what is the total value chain. इक्विपमेंट डिज़ाइन मैन्युफैक्चर से लेकर के उसकी कमीशनिंग होनी है, उससे एनर्जी प्रोडक्शन होनी है, उसकी मैनेजमेंट होनी है, एनर्जी कंजर्वेशन होनी है, उसके लिए मैन पावर ट्रेन होनी है, डीकार्बनाइजेशन, ब्ला ब्ला ब्ला, वो सारा एंड टू एंड. और ये आप जितने किस्म की आप एनर्जी सोच सकते हैं सबके लिए अलग अलग करना है. फिर वी हैव टू डिसाइड कि इसमें से कौन से कोर्सेज हैं जो बीटेक लेवल पे चल रहे हैं, कौन से कोर्सेज एमटेक लेवल पे चल रहे हैं, कौन से कोर्सेज 6 महीने के इंटर्नशिप से काम चल जाएगा, कहाँ 3 महीने का कोर्स करेंगे, कहाँ उसको एक अवेयरनेस का छोटा 30 घंटे का मॉड्यूल देना पड़ेगा. सो दैट विल हैव टू बी डन, एंड दिस इज जस्ट वन एरिया आई एम मेंशनिंग. It has to be for every technology. We have to think through it. You have to create those many number of groups here to do that. Similarly, mobility. No, it's huge. It is a seamless thing. This is never going to go totally AI based. रहेगा. बहुत कम काम हुआ भी इसके ऊपर. काम करने की जरूरत है. So this is one area which I would recommend. Right from micro mobility to ride share, integrated mobility, connected cars, hyperloops, freight deliverables, autonomous cars, then dark roads, sensors, IoT based roads, dynamic EV charging, everything will have to be there. Next generation urban traffic systems. And ultimately, though, everything will be a connected world. So this is basically Industry 5.0, if you may say so. So thank you so much. Now I would be happy to take any number of questions, any clarifications. Thank you so much. It was great. In fact, there are many things which we will have to discuss internally. जी 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 जी. एक्सक्यूज मी सर. सर आपने ये जो चीज़ें हैं उसमें स्किलिंग, असेसमेंट एंड देन अवार्डिंग, ऐसे 3 पार्ट में ये पूरा डेमोन्स्ट्रेशन आपने दिया है. स्किलिंग में तो वी आर सेटिस्फाइड, मतलब स्किलिंग हम कर सकते हैं, चाहे उसमें क्वालिटी वगैरह सब डाल सकते हैं. मेन प्रॉब्लम है असेसमेंट का. तो असेसमेंट के बारे में उसको हम इम्प्रूव कैसा कर सकते हैं, क्योंकि असेसमेंट जो है वो कोई भी स्किल सेंटर के पूरे दायरे में नहीं आता. इट इज़ ए आउट ऑफ द कॉन्टेस्ट. अब मैं कुछ चंद बातें आपको बताता हूँ कि एक तो लोगों में बहुत कंफ्यूजन है
कि जब 2009 में ये क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क की पहली बात जब हुई थी इंडिया में, तो उसमें ये कॉन्सेप्ट था कि जो सर्टिफिकेट है वो अवार्ड करने वाली पूरी इंडिया में एक ही बॉडी रहेंगी, चाहे कोई भी कोर्स चलाए, चाहे यूनिवर्सिटी चलाए, चाहे कोई छोटी इंस्टीट्यूट चलाए। डिप्लोमा अवार्ड करने वाली एक ही बॉडी रहेंगी, चाहे कोई भी डिप्लोमा रन करे, और डिग्री देने वाली वो यूजीसी के तहत रहेंगी। आज क्या होता है कि जैसे हमारे महाराष्ट्र में जो डीटी है या बीटी है वो डिप्लोमा अवार्ड करती है 3 साल का, और नॉन एआईसीटी 2 साल का। हमारी जो बोर्ड है, हमारा अभी वोकेशनल बोर्ड है, वो भी 2 साल का डिप्लोमा देता है। तो लोगों में ये कन्फ्यूजन होता है कि आखिर में डिप्लोमा देने वाली एजेंसी कौन है और सर्टिफिकेट देने वाली एजेंसी कौन है, क्योंकि अभी एनसीईटी ने भी कुछ डिप्लोमा शुरू कर दिए है ऑलरेडी, जो एआईसीटी के डिप्लोमा है वो भी है। इसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि जो रिक्रूटमेंट रूल्स है महाराष्ट्र में, उसमें जहाँ डिप्लोमा, जैसे हमारे आईटीआई का जो इंस्ट्रक्टर है उसके लिए क्वालिफिकेशन होता है डिप्लोमा, लेकिन दैट शुड बी अवॉर्डेड बाय द डीटी ओनली। मैं आपकी बात समझ गया, लेट मी आंसर दैट क्वेश्चन। सबसे पहली बात, हम जो स्किलिंग करते हैं वो हम करते हैं पूरे इकोसिस्टम के लिए, पूरे देश के लिए, उस सरकारी नौकरियों के लिए स्किलिंग नहीं करते। हमारे पास सबसे बड़ा चैलेंज है कि हमने स्किलिंग को एस्पिरेशनल बनाना है। एस्पिरेशनल बनाने का मतलब यह है कि किसी बच्चे के पास अगर एक स्किल है, उसको इन्फीरियरिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए एज कंपेयर टू अनदर पर्सन जिसके पास कोई स्किल नहीं है लेकिन उसके पास यूजी का सर्टिफिकेट है। उसके सामने उसको सिर झुका के बात नहीं करना, सिर उठा के बात करना है। स्किलिंग जो है दैट हैज टू बी मेड एस्पिरेशनल, और स्किलिंग को एस्पिरेशनल बनाने के लिए जो भी बन पड़ेगा, जो भी बन पड़ रहा है, हम सब कर रहे हैं। इसीलिए स्किल को हमने जनरल एजुकेशन के साथ इंटीग्रेट किया है, इसलिए हम जनरल एजुकेशन के साथ उसकी इक्विवेलेंस की बात कर रहे हैं। और जो हम डिप्लोमा एक संस्था जारी करे, 2 जारी करे, 50 जारी करे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले मैं आपके पहले सवाल के ऊपर आता हूं, असेसमेंट। असेसमेंट में जो आज के दिन में असेसमेंट कर रहे हैं, हमें असेसमेंट्स के बारे में सिर्फ एग्जामिनेशन के सिवाय और कुछ नहीं पता। लेकिन असेसमेंट कितने तरह की है? असेसमेंट है डायग्नोस्टिक असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट, सबमेटिव असेसमेंट, क्राइटेरिया बेस्ड असेसमेंट, रेफरेंस बेस्ड असेसमेंट, इंडस्ट्री असेसमेंट, एआई बेस्ड असेसमेंट, पीयर टू पीयर असेसमेंट। 10 किस्म की असेसमेंट है जो ग्लोबली होती है। इसमें इंजीनियरिंग कॉलेज में हम कुछ हद तक फॉर्मेटिव असेसमेंट करते हैं, जब हम उनको क्लास ट्यूटोरियल्स देते हैं, असाइनमेंट्स देते हैं, उसकी असेसमेंट करते हैं, तो उसके नंबर जुड़ते हैं। फिर क्लास टेस्ट लेते हैं हम 1-1 महीने के बाद वाले, और उसके बाद फाइनल एग्जामिनेशन होता है। स्पेशली जो ऑटोनमस इंस्टीट्यूशंस हैं, मैं काउंट कर रहा था, 75 to 79 I completed my BTech, 4 years. During that period, 4 सालों में मैंने 600 एग्जामिनेशंस और क्विजेस दिए। 600। That means every week there is an examination or a quiz. और मेरा जो ग्रेड पॉइंट एवरेज आया, वो सिर्फ 1 नाइट मैराथन नहीं थी, वो उसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट था सारा। वो असेसमेंट उस समय अच्छा हुआ, मुझे उसका फायदा हुआ। लेकिन अगर वो असेसमेंट अच्छा नहीं करूंगा, मुझे नहीं पता बच्चे को स्किल आती है कि नहीं आती। तो असेसमेंट के लिए हमने क्या किया है, वी हैव created a system of recognizing the international assessment agencies. Now, which is the best assessment agency globally? Name a few. For example, Pearson VUE, which assesses skills for more than 500 globally top companies. जो Fortune 500 companies हैं, उसमें से majority को Pearson VUE assess करता है। They are our assessment agency, उनको recognize किया हमने। TCS है, मेटल मर्सर है, SHL है।
तो ये ग्लोबल एजेंसीज को हम ला रहे हैं असेसमेंट के लिए। अभी जो आपकी डीजी है, डीजीटी, डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग, या यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी को कानून ने अधिकार दिया है कि यूनिवर्सिटी खुद ही पढ़ा सकती है, खुद ही बच्चे को असेस कर सकती है, वो कानूनी अधिकार है, तो उसको तो मुझे रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। असेसमेंट का अधिकार उनको देना पड़ेगा। साथ में उनको ये भी कहा है कि अगर आप किसी सब्जेक्ट में ये फील करते हो कि आपको असेसमेंट के लिए बाहर से आपको असिस्टेंस लेने की ज़रूरत है, तो आप हमारी असेसमेंट एजेंसीज के थ्रू भी करवा सकते हो। सो दैट्स वेरी वेरी क्रूशियल, यू आर एब्सोल्युटली राइट। बिना असेसमेंट के तो कुछ नहीं है। इसमें आपको मैं थोड़ा इंटरप्ट करता हूँ। अभी देखिए कि आईटीआई का जो सिस्टम है, पहले आईटीआई की जो एग्ज़ाम होती थी उसमें इंजीनियरिंग ड्राइंग पेपर होता था, एम्प्लॉयबिलिटी होता था, मैथ्स होता था और थ्योरी होती थी। अभी डीजीटी ने क्या कर दिया है कि उसका सीबीटी टेस्ट कर दिया। अब इंजीनियरिंग ड्राइंग सीबीटी में कैसा टेस्ट हो सकता है? तो असेसमेंट का जो इश्यू मान लिया आपकी बात, तो आप ऐसा क्यों नहीं करते कि आपने यहाँ शुरू कर दें? आपको तो मना ही नहीं है। नहीं, वो तो डीजीटी के नाम से चलना पड़ेगा ना। आप इन एडिशन टू दैट आप अपना टेस्ट कर सकते हैं, जो क्लास में टेस्ट करते हैं वहां आप करिए, क्या दिक्कत है? मैं अलाउ कर रहा हूं आपको, आई एम द अथॉरिटी टू अलाउ। तो एग्जाम तो डीजीटी लेती है ना। लेने दो उसको, वो एग्जाम फाइनल एग्जाम लेती है, लेकिन जो उसका जो साल का असेसमेंट है उसमें आप करो। नहीं, वो हम करते हैं इंटरनल, उसमें टेस्ट लो आप। लेकिन क्या होता है कि जो बच्चा, अभी देखो, you have made your point, I've understood your point, and I've given you a solution that you do it locally, no issues। वहां डीजीटी को पूरे देश को देखे चलना है। आपको पता है डीजीटी का बैकलॉग कितना है एग्जामिनेशंस का? डीजीटी को कितनी भाषाओं में क्वेश्चन पेपर बनाना पड़ता है? आप एक अच्छे स्टेट हो, आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। देयर आर स्टेट जहां 6-6 साल से बच्चे पास नहीं हो रहे, उनकी उम्र भी क्रॉस कर गई है, वो सारे इकट्ठे होकर आ जाते हैं, हमारा कोई हल निकालिए। यू आर एब्सोल्युटली राइट। उसमें जो पेपर है, जो ड्राइंग का पेपर है, दैट हैज टू बी सेपरेट। जीडीआर एमडीआर अगर सेपरेट नहीं होगा, जिस बच्चे को ना ड्राइंग बनानी आए ना समझने आए, तो वो क्या करेगा? आई फुली एग्री विद यू। हेलो, hello, good afternoon sir. हाँ जी, गुड आफ्टरनून। So how engineering faculties will be utilized for skill India development? अच्छा, How we will get training? there is something called मिशन मालवीय, राइट? मिशन मालवीय में यूजीसी इज ट्रेनिंग 15.5 lakh teachers over a period of next 3 years time, and that entire budget is being provided by the Ministry of Higher Education. तो उसमें 15 दिन की ट्रेनिंग है, ऑन साइट ट्रेनिंग है। 111 इंस्टीट्यूशंस हैव बीन आइडेंटिफाइड जहां ये ट्रेनिंग होगी। उनके लिए जो 50 से ज़्यादा जो कोर्स मॉड्यूल्स हैं छोटे छोटे, वो बनाए गए हैं। उसमें ये जो कोर्स मॉड्यूल्स हैं, इसको एब्सोल्युटली द टॉप पर्सन्स दे हैव रिकॉर्डेड दीज मॉड्यूल्स फॉर देम, और ये मॉड्यूल्स तो रन किए जाएंगे, प्लस जो मास्टर ट्रेनर्स हैं उनको ट्रेन करेंगे। सिमिलर थिंग वी आर ट्राइंग टू रन फॉर एआईसीटी। एआईसीटी इज ऑल्सो वर्किंग ऑन द सेम थिंग। तो हम ये सोच रहे हैं कि एआईसीटी के जो टीचर्स हैं ये भी इसी में कवर हो जाए। सो दिस विल हैव टू बी डन। बाकी आई रिक्वेस्ट द महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट इफ दे वांट टू ऑर्गेनाइज समथिंग फॉर दिस, तो जो मटेरियल है उसके लिए, जो कोर्स मटेरियल है, वो मैं यूजीसी के साथ वर्कआउट करवा दूंगा। That can be done. गुड आफ्टरनून सर। हाँ जी, गुड आफ्टरनून। यार हाथ खड़ा कर देकर मुझे पता नहीं लगता का। अच्छा, हाँ सर, अभी एनईपी 2020 की बात हो रही है, हाँ। तो उसमें मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट है। हाँ तो फर्स्ट ईयर का कोर्स खत्म होने के बाद में उसको सर्टिफिकेट कोर्स मिलेगा, जी। तो उसको नौकरी के चांसेस कितने होंगे? उस सर्टिफिकेट के बेस पे उसको जॉब मिल सकता है क्या सर? लेकिन बिल्कुल नहीं मिल सकता। इसीलिए उसके साथ एक प्रावधान किया गया है कि उसको 10 क्रेडिट का एग्जिट मॉड्यूल करना होगा, और वो एग्जिट मॉड्यूल इज नथिंग बट द एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। अच्छा, उसको वो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स अगर हो जाए, उसके पास आ जाए, तो उसको बहुत अच्छी जॉब मिलेगी। तो वो ऑलरेडी बना दिया गया है।
बट ये कंपनीज को पता होगा क्या कि भाई ये 1 साल के बाद बच्चा बाहर निकलने वाला है और इसको इस सेक्टर में जॉब जाइए, मिल सकता आप है? जाइए, बताइए, बात कीजिए। कंपनियों को पता है, कंपनियों के साथ हम लगातार बात कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं, लेकिन आप भी बताइए। ओके, थैंक यू। Sir, good afternoon. Sir, as explained by you, every course curriculum will have certain credits. So when there is a vertical mobility and a horizontal mobility, say for example, I have done my one course and I have achieved some credits in one particular system, one particular organization. Now I want to shift to other. Right. So there has to be an acceptability by the other agencies to accept that my credits can be overtaken. So I completed some diploma and then I want to go to a graduation to other university. That university should also accept those credits. So what is the provision at the national level where guidelines have been issued to this? I'll ask you a counter question. Yeah, You have done BA from a top institution right, sir. with first class, first gold medalist, and there is somebody who has done BA from a very, very poor place, and he's a third divisioner, just passed, 33% number है. Right. दोनों बच्चे are they authorized to take the civil services examination? Yes, sir. वहाँ को पूछता है कि नहीं पूछता. क्रेडिट कहाँ से है? Right. है ना? But yeah, got I'm, it. Sir, got I'm it. answering your question. Yes, sir. I have not answered fully. Yes. Okay. So that means कि acceptability जो है ये unquestionable है, पहली बात. दूसरी बात, वो क्या कर सकता है? एक पर्सन है, वो एक स्टेट से आया है, उसने बीए इकोनॉमिक्स का एक कोर्स किया है और वो आके एमए इकोनॉमिक्स में एडमिशन चाह रहा है दूसरी स्टेट में. तो जो एमए इकोनॉमिक्स की जो फैकल्टी है उसके पास ये अधिकार है कि वो देखे कि अच्छा भाई आपने बीए इकोनॉमिक्स में आपने जो सब्जेक्ट किए हैं इसमें आपने मैथमेटिक्स किया था जो एक प्री रिक्विजिट है हमारे एमए के एडमिशन के लिए. अगर वो नहीं है तो वो उसको ये प्रावधान करके देगा कि आप उसका एडिशनल क्रेडिट एक करें हमारे यहाँ, जैसा फॉरेन कंट्री में होता है. जो गैप क्रेडिट्स हैं उसके करने का प्रावधान है, वो आप उसके लिए इंसिस्ट कर सकते हो, लेकिन आप मना करोगे ये नहीं कर सकते, उसके लिए हिदायतें जारी हो गई. And sir, will this credit system replace the existing migration and transfer certificate system between the universities? Absolutely. This will totally replace that. So any guidelines regarding that has been issued? Because now my यार अभी तो अब question. NCrf की गाइडलाइंस जारी कर रहे हैं. Okay. Now tomorrow we are holding, all 4 regulators are holding a consultative session with the IITs and with about 200 vice chancellors of the university. We are holding it in Delhi. Okay. So there we are presenting the final SOP. Okay, there's 3 subcommittees have been formulated, one for higher education, one for vocational education, one for school education. तीनों चेयरपर्सन सब कमिटीज के वहाँ प्रेजेंटेशन देंगे, डिस्कशन होगा, उसके बाद हम इसको बिल्कुल पब्लिक कर देंगे. ठीक है. Thank you, sir. इसके बाद गाइडलाइंस आनी शुरू होंगी. अभी यहाँ बहुत झगड़ा चलेगा, ऐसा हुआ वैसा हुआ. ये पुराना जब NEP आया था 86 में आया था, उसको इम्प्लीमेंट होते हुए कितने साल लगे? 30 साल में तो इम्प्लीमेंट हुआ नहीं. ये तो NCrf तीसरे साल बना के खड़ा कर दिया, आपके सामने ला के रख दिया. इसको आने में, इसको हजम करने में भी समय लगेगा थोड़ा सा. हाँ, वो तो गया ना, जब 86 आ गया तो फिर वो 64 खत्म हो गया. हाँ जी जी बताएं. आप पहले पीछे बताएं जी. माइक दीजिए, माइक. सर माय नेम इज डॉक्टर पाटनवाला एंड आई एम वर्किंग इन सस्टेनेबल मोबिलिटी. सर मेरा यहाँ पे क्वेश्चन है, इट्स अ केस आई वांट टू अंडरस्टैंड. लेट्स से इफ अ स्टूडेंट पास 12th विद कॉमर्स और उसने 2 years ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में काम किया है, RPL लेके वो लेट्स से 4.5 स्किलिंग NSQF का 4.5 का सर्टिफिकेशन लेता है. दस ही इज अलाउड टू टेक BE ऑटोमोबाइल 4.5 के आगे 5, 5.5 और 6? यस. इज ही अलाउड बिकॉज उसका बैकग्राउंड कॉमर्स है. लेटरल एंट्री वो कर सकता है, और इस लेटरल एंट्री के लिए यूजीसी ये भी कंसिडर कर रहा है कि क्या कोई बच्चा 12th के बाद उसने अब सेल्फ स्टडी की, कुछ कोर्सेज 50% स्किल के कोर्सेज अपने आप कर लिए, 50% जो उसका अकेडमिक का पार्ट है उसके लिए तैयारी कर ली, तो क्या वो वापस सिस्टम में आ सकता है सेकेंड ईयर में डायरेक्टली?
इसके ऊपर भी यूजीसी वर्कआउट कर रही है, लेकिन उनके जो सबसे बड़ा चैलेंज है कि यहाँ दुकानें खुल जाएंगी, वो बहुत बड़ा एक चैलेंज है। क्वालिटी कैसे मेंटेन होगी? तो इफ वी आर एबल टू मेंटेन क्वालिटी, देन इट विल बी फाइन। ठीक है। बट सर उसने कॉमर्स किया है, देन ही हैज डन द आरपीएल, तो उसका फर्स्ट ईयर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर उसको इंजन खोल के बांधना आता है तो ऑटोमोबाइल जा सकता है, क्यों नहीं जा सकता? ओके, उसको जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए आपके हिसाब से? डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। तो यही तो मैं कह रहा हूं, जा सकता है। थैंक यू सर। नमस्कार। बेसिकली इतने सारे एनईपी के वर्कशॉप मैंने देखे हैं। कुछ सवाल पॉलिटेक्निक पॉइंट ऑफ व्यू में अलग अलग प्लेटफॉर्म पे पूछते आया हूँ, बट जिस ढंग से आंसर मिलना चाहिए था लिटिल बिट मिसिंग हुआ, या मैं समझ नहीं पाया, ये भी हो सकता है सर। तो थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल वर्कशॉप। बेसिकली मेरा क्वेश्चन ये है सर कि एनईपी में, एनईपी और प्रीवियस में 10+2 वाला पैटर्न था, और यहाँ एनईपी में जो है वो 5+3+3+4। ठीक है, हम पॉलिटेक्निक वाले एग्जैक्टली कहाँ बैठ रहे हैं? क्योंकि स्कूल की बात करें तो उनका अपना बोर्ड है, हायर का अपना है। आप कहाँ बैठना चाहते हैं? हायर एजुकेशन ज्यादा बेटर रहेगा सर। बेटर रहेगा। हाँ। तो अभी आप एआईसीटी के साथ भी है ना? जी है ना? तो एआईसीटी कहाँ आता है? हायर एजुकेशन में। जी ठीक है जी। खुश हो? बट एट द सेम टाइम एक सर्कुलर आया था सर, जिसके अंदर ये बोला था कि एंटायर पॉलिटेक्निक सिस्टम might be in future will be going to skill development ministry. Again, no. community development it is not तो जा चुका है सर। अभी नहीं, अभी ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ है। क्योंकि अगर जो फैसला होगा तो सबसे पहले तो उस पर मैं ही साइन करूंगा ना। अभी ऐसा नहीं हुआ जी। दूसरा सवाल ये था सर मेरा कि बेसिकली क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क्स अलग अलग लोग अलग अलग ढंग से देते हैं। एनएसक्यूएफ का अपना है, सीवीटी का अलग है। सो से फॉर एग्जांपल जब मैं एनएसक्यूएफ क्वालिफिकेशन फ्रेम वर्क की बात करता हूँ अंडर पीएमकेवीवाई और कुछ हो, मेरा एक जो मेरा ऑब्जर्वेशन है मैं आपके सामने रख रहा हूँ, माइट भी गलत हो सही हो, आप पे छोड़ दूं मैं। तो बेसिकली जैसे सर ने अभी पूछा था कि क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क लेवल 4 लेवल 5 जो भी है जिसको इवेल्युएट किया जाता है, बेसिकली उस इवेल्युएशन का काम करती है सेक्टर स्किल काउंसिल। ठीक है सर। और सेक्टर स्किल अगेन सेक्टर स्किल काउंसिल नहीं करती है, अवार्डिंग बॉडी करती है। सेक्टर स्किल काउंसिल तो 35 है, अवार्डिंग बॉडी 100 है। अभी वो सेक्टर स्किल काउंसिल का कंसेप्ट खत्म हो गया, वो पुराना था। सो दैट्स अ गुड पार्ट सर, बिकॉज मेरे यहाँ बीओ कोर्स भी रन होते हैं, और बीओ कोर्स रन होते वक्त जब हमने ऑब्जर्व किया है कि जो हम क्वेश्चन पूछते हैं और सेक्टर स्किल काउंसिल क्वेश्चन पूछते हैं, ये बहुत सेक्टर स्किल काउंसिल असेस नहीं कर सकती, उसको असेसमेंट का अधिकार नहीं है। अब उनका असेसर तो है सर। वो जो अधिकार है वो असेसमेंट एजेंसी का है, रिकॉग्नाइज्ड असेसमेंट एजेंसी। जी जी। जो सेक्टर स्किल काउंसिल जो अवार्डिंग बॉडी है वो उनको ऑनबोर्ड कर सकता है। जी जी। उसका इतना ही काम है। जी जी। वो क्वेश्चन बैंक जो है बनाने में उनकी सहायता कर सकता है जी। लेकिन अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी असेसमेंट की असेसमेंट एजेंसी की रहेगी। बट वही गड़बड़ हो रही है सर, मैं यही तो कहना चाह रहा था आपसे कि पॉलिटेक्निक, पीवी पॉलिटेक्निक, मेरा पीवी पॉलिटेक्निक से बिलोंग करता हूँ, एसएनडीटी वुमेन्स यूनिवर्सिटी का अपना पॉलिटेक्निक है, और हम उस पीरियड में जब ऑब्जर्व किए, जब बीओ रन कर रहे थे कि हमारे बच्चे आसानी से सेक्टर स्किल काउंसिल के एग्जाम पास हो रहे थे, तो मैं ये सोचा कि मेरे यही तो मैं बता रहा हूँ कि वो चेंज कर दिया है अब। अच्छा, एब्सोल्युटली चेंज हो गया। यही तो बता रहा हूँ कि आप पुरानी बात कर रहे हैं। दैट वाज अबाउट 3 years बैक व्हेन दे वर डूइंग असेसमेंट। अभी वो नहीं है। ये अच्छा रहेगा सर, थैंक यू सो मच। उससे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन है, उन्होंने वो बताया नहीं। तो यार तुम दिल्ली आ जाओ अगर इतने सवाल है तो। पॉलिटेक्निक और आईटीआई का इशू है सेम। हाँ। क्योंकि अभी हम एडमिशन करते हैं 10वीं पास वालों की। अब ये पैटर्न में जो है वो चेंज हो जाएगा 10+2 और 3 में। तो इसमें अभी एंट्री क्वालिफिकेशन जो आईटीआई और पॉलिटेक्निक की वो भी चेंज हो जाएगी। देखिए, मैंने अभी जो इस पर विचार कर रहा हूं मैं कि अभी 10th पास बच्चे को कोई पढ़ा लिखा नहीं मानता। वो मिनिमम क्वालिफिकेशन है, उसको ऑलमोस्ट लिटरेट मानते हैं, पढ़ा लिखा नहीं मानते। पढ़ा लिखा जब तक वो बच्चा 12th नहीं होता उसको नहीं मानते। दूसरा, अभी जो मेरी 11th और 12th की एजुकेशन है अंडर द NCrf, वो इतनी ज़्यादा अच्छी हो गई है, अभी इतनी इंटीग्रेटेड और कॉम्प्रिहेंसिव हो गई है कि अगर उस एजुकेशन के बाद उसको मैं स्किलिंग कराऊं तो बहुत ज़्यादा फायदा रहेगा, और बच्चा मैच्योर भी हो जाएगा, उसको ये समझ भी आ जाएगी वो किस एरिया में जाना चाहता है।
पहले जब हम करते थे 10वीं में जो बच्चा जब आता था काफ़ी बड़ा होता था, कई बार तो गांव के बच्चे तो ऑलमोस्ट मेच्योर्ड होते थे, तो उनको समझ होती थी कि हम ये करना चाहते हैं और ऐसा ही करेंगे। अभी 12th के बाद जो बच्चा आएगा उसको ये क्लैरिटी होगी। और दूसरा, जब हम वोकेशन की बात करते हैं या ITI की बात करते हैं, ITI का मतलब वो फिटर और इलेक्ट्रीशियन और जो शेपर पे काम करने वाला बंदा नहीं है। अभी ITI के ऊपर IoT पे काम करने वाला, IIoT पे काम करने वाला, AI पे काम करने वाला, वो सारी स्किल्स ITI में आ रही हैं। तो वो सारी स्किल्स समझने के लिए, उसके बेसिक करिकुलम को समझने के लिए भी मुझे 12th का बच्चा चाहिए। तो मैं ऑलरेडी इस मामले में सोच रहा हूं कि क्या मैं ITI की एक स्ट्रीम को 10+2 के बाद लूं, ताकि 2 साल के बाद और मैच्योर्ड बच्चा मेरे पास आए। तो उसके लिए एक कमेटी अभी गठित कर रहे हैं, अगले हफ्ते तक गठित कर देंगे। गुड आफ्टरनून सर। जो टोल पास के जो कोर्सेज थे कोपा वगैरह टाइप के, वो भी अभी 10 पे कर दिए, तो फिर से टोल पे करना पड़ेगा। गुड आफ्टरनून सर। सर आपने अभी बोला कि इन अराउंड 2047 इंडिया ग्लोबली मैन पावर सप्लाई करना चाहता है या सप्लाई होना चाहिए, पहले करना चाहता है, उसके पहले ही सर। सो वन साइड वी आर सेइंग कि हम ग्लोबली मैन पावर सप्लाई करेंगे, और अनदर साइड हम जो टेक्निकल एजुकेशन है वो रीजनल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहे हैं। सो हमारे जो स्टूडेंट है वो ग्लोबली कॉम्पीट कैसा कर पाएंगे? उसमें तकलीफ है हमें कोई क्या? आप सर अगर बात सुनो, बैठ जाओ। आई हैव अंडरस्टूड योर क्वेश्चन एंड आई फेस दिस क्वेश्चन, आई एम स्टिल फेसिंग दैट क्वेश्चन फ्रॉम ऑल द IITs। आई एम फ्रॉम IIT। और ये सबसे पहले जो मुद्दा मैंने 2020 में उठाया था, प्रधानमंत्री जी के साथ मुद्दा उठाया था, उन्होंने अनाउंस किया, बिहार में उन्होंने अनाउंस किया था कि हम टेक्निकल एजुकेशन सारी भारतीय भाषाओं में देंगे। पहली बात, जब हम भारतीय भाषा में एजुकेशन देते हैं, हम नहीं कहते कि अंग्रेजी मत सीखो। दूसरा, हम बच्चे को ये नहीं कहते कि आप सिर्फ भारतीय भाषा में लिखोगे, आप अंग्रेजी में लिख सकते हो, समझ भारतीय भाषा में सकते हो। तीसरा, हम उसको ये नहीं कहते कि आप जो शब्दावली है ये वही शब्दावली उठाओ वो लेके आओ, आप मिक्स लैंग्वेज यूज कर सकते हो। अब आपसे एक मैं सवाल पूछता हूं, अंग्रेजी जानने वाले कितने परसेंटेज लोग हैं इंडिया में, बताइए? नहीं, आप बताइए कितने हैं परसेंटेज एग्जैक्टली? फिर भी 25 to 30%। 5%। ओके। तो आप 95% बच्चों को अपने जो टेक्निकल एजुकेशन सिस्टम के बाहर रखना चाहते हैं? आप अच्छे देशभक्त हैं भाई। मेरा काम है कि मैंने सब बच्चों को जो 95% में आता है, जिसको अंग्रेजी नहीं आती, वो कैसे मैं सिस्टम में लाऊं। उसको अंग्रेजी सीखने से, अंग्रेजी से कोई दुश्मनी नहीं हमारी। अगर ग्लोबल मैंने जाना है, और मैंने ग्लोबल 100% नहीं भेज देने भाई, उसमें से 90% बच्चे तो इंडियन के शॉप फ्लोर पे काम करेंगे। जो वर्कर जिससे काम करवाना है वो अंग्रेजी जानता है क्या? उसको तो मैं अपनी भाषा में समझाऊंगा ना। अगर अभी मैं ये बात जो आपसे कर रहा हूं, अगर मैं अंग्रेजी में समझाता तो इसका जो इंपैक्ट होता जो अभी ये हो रहा आपके ऊपर। इसलिए उससे कोई दुश्मनी नहीं है, अंग्रेजी से कोई दुश्मनी नहीं है। हम ये कहते हैं कि भारतीय भाषा में भी सारा सब्जेक्ट मैटर अवेलेबल होना चाहिए। अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहे, उसको IITs को हमने सलाह दी कि भाई आप कहते हो कि आप तो नेशनल लेवल पर एडमिशन करते हो, जरूरी नहीं कि आंध्रा के बच्चे जो हैं वो सिर्फ आंध्र प्रदेश में ज्वाइन करें, वो इंडिया में कहीं ज्वाइन कर सकते हैं। ऑलराइट, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक पर्सन जो तेलुगु में पढ़ाए, उसके साथ ऑनलाइन क्यों नहीं जुड़ सकते? जुड़ सकते हैं ना। उनकी रेगुलर क्लास जो अंग्रेजी की चल रही है वो चले, उसके साथ उनको मैं तेलुगु में भी समझाऊं। अब किसी को डाई बतानी थी, डाई जो बनाते हैं हम ITI में, अब डाई, अब बच्चे हैं उनको समझा रहे हैं डाई, उनको समझ नहीं आ रहा। उड़िया में क्लास चल रही थी, तो एक बंदा ऐसा कहा सांचो, ओ सांचो, आधे मिनट में अब समझ में आ गया सांचा बनाने की बात कर रहे हैं।
तो जब तक लोकल भाषा में हम उसको नहीं समझाएंगे, अच्छा आप IITs में चले जाओ, आप NITs में चले जाओ, वहां पे आपको 90% लोग क्लास के अंदर क्लास के बाहर अपनी मातृभाषा में बात करते दिखेंगे, ठीक है? तो वहां क्यों नहीं इतराज करते आप क्यों नहीं कहते कि भाई टाई बांध के आओ, अंग्रेजी बोलो, काले जूते पहनो? वहां तो नहीं कहते। इसलिए हमें इसको सपोर्ट करना है। भारतीय भाषा जब हम अपनाएंगे तो वो जो 95% बच्चे जो बहुत इंटेलिजेंट हैं, कहीं ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, वो बच्चे जुड़ पाएंगे सारे इकोसिस्टम के साथ। इसके साथ साथ हम ये कह रहे हैं कि आप जितने भी एडवर्टाइजमेंट्स देते हो, आप उसमें लिखते हो कि जी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग एसेंशियल क्वालिफिकेशन BE, आप कभी ब्रैकेट में लिखते हो कि BE इंग्लिश और एनी अदर इंडियन लैंग्वेज? वो लिखना चाहिए, क्यों ना लिखें? अगर UPSC के एग्जाम में एक बच्चा जो हिंदी मीडियम से जिसने BTech किया है वो अलाउड है बैठने के लिए, तो दूसरी जगह क्यों नहीं? और क्या हर कंपनी जो बड़ी कंपनी है काम करती है वो सारे बंदों को बाहर भेजती है क्या? नहीं भेजती। So have I answered your question? Thank you. जी, सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर क्लियरिंग आवर डाउट्स। सर जैसे कि मैं सेशन समझ रहा था तो यहाँ पर मुझे जो लेवल्स के आपने बताया कि लेवल 2, 3, 4 से लेकर मास्टर एंड PhD तक हमारे पास में सारे ऑप्शन है, पर सर मैं थोड़ा ये समझना चाहता हूँ ना कि इसमें जैसे कि मैं एज अ कैंडिडेट हूँ और मुझे ट्रेनिंग लेना है तो मेरे लिए कितना फिजिबल है। फॉर एग्जांपल जैसे कि अभी मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ PMP के लिए, सो आई नो देयर इज़ अ स्पेसिफिक PMI पोर्टल wherein I have to register myself and then I have to enroll myself and then I can start attending the training. उसमें कुछ प्रोफेशनल डेवलपमेंट यूनिट्स होता है 35 आवर्स का। वंस आई कंप्लीट इट, बीच बीच में मुझे MCQs देने होते हैं, आई गेट द सर्टिफिकेट, एग्जाम भी देने होते हैं, वो ग्लोबली रिकग्नाइज है। बट मैं जब सब देख रहा था ना तो मुझे थोड़ा, आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन ऐसा है कि NSQF भी देखना है, देन क्रेडिट फ्रेमवर्क भी देखना है, एंड आई डोंट नो हु इज गोइंग टू प्रोवाइड अस द कंटेंट एंड हु इज गोइंग टू टेक द असेसमेंट। सो थोड़ा फिजिबिलिटी वाला मुझे थोड़ा इसमें कितनी देर समझाई मैंने आपको? अभी ये मैंने समझाया आपको 1:30 बजे से लेकर के और 12:30 से लेकर के, रात 12 से लेकर के 1:30 बजे तक, ठीक है? अभी 1:30 भी नहीं बजे, अभी 1 घंटा ही समझाया आपको। एक चीज को बनाने में मुझे 1 साल लगा है, तो आप 1 घंटे में कैसे समझ जाएंगे? जिसमें हर चीज की एब्सोल्यूट क्लैरिटी है, प्रोवाइडेड यू रीड द डॉक्यूमेंट, and those documents are absolutely simple, straightforward. उसमें से सब कुछ हमने निकाला हुआ, उसमें कोई अंग्रेजी नहीं लिखी हुई इस तरह की कि उसका मतलब ना निकले। तो मैं ये करूँगा आपके एडवांटेज के लिए, I will share all the important documents which I have discussed here, which I have shown here, जो URL में मैंने आपको दिखाए हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट आपको आपके साथ मैं शेयर कर दूंगा। आप एक बार पढ़ लीजिए उसको, उसमें एब्सोल्यूट क्लैरिटी है, कोई कंफ्यूजन रहने नहीं दिया हमने। कंफ्यूजन वहीं रखा है जहां हम चाहते हैं कि कंफ्यूजन हो। जी, बिल्कुल। Diploma is 4.5. How he earns that 0.5 credit now? He is working 3 years in the industry. ठीक है, तो उसके लिए जो आपका बोर्ड है,
आपके बोर्ड को वर्कआउट करना पड़ेगा इसको, जो आपका डिप्लोमा बोर्ड है, स्टेट बोर्ड है ना, स्टेट बोर्ड को वर्कआउट करना पड़ेगा और स्टेट बोर्ड वर्कआउट करके इसको नोटिफाई करेगा कि अभी किसी ने, जिसके पास ये क्रेडिट्स हैं, उसने अगर ये आधा क्रेडिट ऊपर करना है तो उसका ये तरीका है, हो जाएगा। But has to undergo again some classroom sessions, practical sessions, etc. Or you just go for the assessment? देखिए असेसमेंट के लिए भी वो जा सकता है, बट योर करिकुलर फ्रेमवर्क फॉर डिप्लोमा doesn't allow that it is 100% RPL. RPL can only be allowed up to certain extent. Okay? If it is pure skilling, RPL can be allowed even up to level 6, no problem. Up to level 7, no problem. प्योर स्किलिंग में फिर डिप्लोमा नहीं, जो प्योर स्किलिंग का डिप्लोमा है, प्योर स्किलिंग के डिप्लोमे में भी उसका कुछ थ्योरेटिकल पार्ट है, वो उसको करना पड़ेगा। अगर उसको मटेरियल्स की नॉलेज है, अगर उसको नए मशीन्स की नॉलेज है, वो उसको लेनी पड़ेगी, सीखनी पड़ेगी, तो वो उसके करिकुलम में दिया हुआ है। किसमें कर पाएगा किसमें नहीं कर पाएगा ये दिया। अगर वो कारपेट वीवर है वो कर पाएगा, मास्टर कारपेट वीवर जो लेवल 7 का है वो भी हो सकता है क्लास भी ना पढ़ाओ। उन लोगों को हम लोग एज ए मास्टर वीवर आइडेंटिफाई करके उनका सम्मान कर रहे हैं, गुरु सम्मान। अभी कल गुरु सम्मान हो रहा है भुवनेश्वर में, ठीक है। गुड आफ्टरनून सर। सर मैं ये पूछना चाहूँगी, अगर सपोज जैसे आपने कहा कि एक्सपीरियंस अगर है तो वो हम क्रेडिट पॉइंट्स में लेते हैं। सपोज 10th के बाद कोई बच्चा लाइक ब्यूटी या हाउसकीपिंग करते हैं 2 साल 3 साल, तो क्या उनका वो क्रेडिट पॉइंट में इंक्लूड होगा? और अगर इंक्लूड होता है तो वो इक्विवेलेंट 12 जाने के बाद क्या वो डिग्री कोर्स ले सकते हैं? आप मेरी बात याद कीजिए कि मैंने कहा था कि क्रेडिट्स मिलने के बेसिक रूल्स हैं। रूल्स ये हैं कि आपको कोई भी लर्निंग करने से पहले, एवरी लर्निंग कैन बी क्रेडिटाइज्ड, तो लर्निंग करने से पहले आपको लर्निंग आउटकम्स डिफाइन करनी पड़ेंगी, उनका लेवल डिफाइन करना पड़ेगा, उसको नोटिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद वो लर्निंग करेंगे, वहां वो वर्क कर रहा है, वो लर्न नहीं कर रहा, वो वर्क कर रहा है। आप मेरी बात समझ गए? वो डिफरेंस समझ में आ गया कि वहां जो लर्निंग है उसकी वो लर्निंग आउटकम्स डिफाइन नहीं है, उसको वहां मैं उसका आरपीएल जरूर कर सकता हूं। रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग अगर वो प्योर एक्सपीरियंस के बेसिस पे ऊपर जाता है तो उसकी आरपीएल कर सकता हूं मैं, लेकिन उसको उसका क्रेडिट नहीं दे सकता जब तक मैं उसको नोटिफाई ना करूं पहले। एग्जाम देनी पड़ेगी वापस असेसमेंट को? उसको एग्जाम देने से पहले भी आपको ये नोटिफाई करना पड़ेगा कि किस चीज पे एग्जाम देगा। यानी क्रैश कोर्स करवाना पड़ेगा ना, आपको ये डिफाइन करना पड़ेगा कि उसका एग्जाम किस चीज पे लेंगी, किस आउटकम पे लेंगी, आउटकम क्या होनी चाहिए उसकी। और अगर वो डिफाइन नहीं है ऑलरेडी तो फिर हमें वो डेवलप करना, आपको डेवलप करना पड़ेगा। जी हाँ, Just one more, and this could be maybe in the minds of many of people here who are in the vocational education as a training partners. All of us, we always feel that the skills need to become aspirational, and that's something which is being talked about the moment skill development has begun. But actual issue comes in when a skill certified person is actually equated with a salary which is not really respected salary as an amount. How do you cater this self-challenge from the industry? you tell me. You tell me. You tell me. So how to make it as aspirational is the question. Industry person sometimes doesn't want his guys to be certified. You know why? Because he knows that if he's certified, he'll ask for higher salary. Okay? So that's the question. हाँ, तो अब मेरे से क्यों पूछ रहे हैं? समाज से पूछो ना भाई, इंडस्ट्री से पूछो। इंडस्ट्री को समझना पड़ेगा
कि अगर इंडस्ट्री ने ग्लोबली कम्पीट करना है तो इंडस्ट्री को एक एक्चुअल स्किल्ड मैन पावर चाहिए होगी। आप उसको एक्चुअल स्किल्ड मैन पावर देते हो क्या? आपकी अगर मैन पावर की क्वालिटी वही है जो एक्चुअल होनी चाहिए, तो वो कभी लेकर के दूसरे किस्म की मैन पावर को नहीं लेगा। लेकिन अगर आप जो स्किल्ड मैन पावर दे रहे हो उसकी क्वालिटी अप टू द मार्क नहीं है, तो वो कहेगा क्या फर्क पड़ता है, मैं स्किल्ड लूं या एक्सपीरियंस वाला बंदा लूं, एक ही बात है, मैं उसके सर्टिफिकेट के ज्यादा पैसे क्यों दूं? वो पैसे देगा अगर वो पर्सन एक्चुअली स्किल्ड होगा, एक्चुअली हायर आउटपुट निकालेगा। So answer lies in our own understanding of the skill and own delivery of skills. आप समझ रहे हैं? जो अच्छी कंपनियां हैं वो हाईली स्किल्ड पर्सन के लिए ज्यादा पैसा देने को तैयार हैं और वो चाहती हैं कि उनको अच्छा बंदा मिले, प्रोवाइडेड वो प्रॉपरली स्किल्ड हो, सर्टिफिकेट वाला ना हो। खाली सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, सर्टिफिकेट का स्किल भी चाहिए। आपके लिए ये है सवाल है जरा। हाँ जी चलिए। No, you may not agree, but I have told you the truth. I speak to industries day in and day out. I speak to all big industry leaders, and all of them have this grievance कि जो आप अपने बच्चों को ले आओ जिसके पास सर्टिफिकेट है, हम देखते हैं उसको कितना आता है। So I get that point. Now one counter argument to that is when we look at the nursing as a profession, why we have 50% turnaround in nursing as a profession while they are getting the job but they are not continuing because they are getting better salary as a respect to their profession outside. तो ठीक है, इसको आप एक्ट में शामिल कर लो, उसको बंदों को मारने की परमिशन दे दो साथ में, तो हो जाएगा। वहां लाइफ डेथ का सवाल है। जो नर्सिंग प्रोफेशन है, नर्सिंग प्रोफेशन में उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है सवाए इसके कि वो सर्टिफाइड नर्स रखे। क्यों? क्योंकि एक एक्ट ऐसा कह रहा है। मैन्युफैक्चरिंग में एक्ट नहीं है, आप ले आओ एक्ट, हो जाएगा। For example, running by the same any management. For example, management has many type of colleges. For example, BCom, BA, engineering college. For example, student has taken admission in B, Bachelor of Engineering, but in the same campus he found there is a BA or BCom, and instead of attending BTech or B, now his interest is in a BCom or BA. So which degree he will get? Although we are providing him. Do you think, should I answer that question or would you answer it yourself? I want answer from you. Okay. Now the system allows that a student has joined BTech and after first year he doesn't find that BTech interesting. He wants to join art stream. He can join art stream. And then उसके लिए जो थोड़ा सा उसका जो लॉस हुआ है फर्स्ट ईयर की वजह से, उसका ब्रिज कोर्स देके उसको सेकंड ईयर बीए में एडमिशन मिल सकता है एज पर एनसीआरएफ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकेंडली, अगर वो चाहता है कि मुझे बीटेक की डिग्री तो मिलनी चाहिए लेकिन मैं अप टू 25% कोर्सेज मैं दूसरे फैकल्टी से जाके करूंगा, वो कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 25% वो किसी और डिपार्टमेंट से करे। मैंने आपको बताया माइनर के लिए वो साइकोलॉजी के माइनर ले ले, हिस्ट्री के माइनर ले ले, ज्योग्राफी की ले ले। बट सर क्लासेस अवेलेबिलिटी कराना और एग्जाम लेना, एक ही टाइम पे एग्जाम ना है, अगेन उसका एनसीआरएफ में उसका कोई जिक्र नहीं है। एनसीआरएफ सिर्फ इनेबल करता है आपको, एनसीआरएफ आपको बाध्य नहीं करता है, आपको इनेबल करता है। आप कह सकते हैं कि नहीं भाई मैं ये क्लास आपका एग्जाम अलग से नहीं ले सकता, मैं ये दे सकता हूँ, ये नहीं दे सकता, आप ये कह सकते हैं। लेकिन वैसे तो फिर सर कोई भी नहीं देगा, हमारे यहाँ अवेलेबल नहीं है बोलेगा। अभी भी क्या होता है सर बहुत बार कि आपका सवाल मुझे समझ नहीं आ रहा, ईयर में इलेक्टिव्स रहते हैं, मतलब क्या करूं मैं, क्या जवाब दूं उसका, आप बताइए। नहीं मतलब आप क्या जवाब सुनना चाह रहे हैं? जवाब का बात नहीं सर, अभी भी क्या होता है समझो कि बच्चा बी कर रहा है या डिप्लोमा ही कर रहा है,
तो फाइनल ईयर में इलेक्टिव्स रहते हैं, लेकिन एक आध बच्चा समझो उसको वो लेना है, तो बहुत बार देयर इज अ लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ठीक है ऑफ टीचर्स भाई, उसने या फैसिलिटी। जो कॉलेज चला रहा है उसने भी तो अपना इकोनॉमिक्स में तो देखना है ना। एक बच्चे के लिए तो पूरा टीचर नहीं हायर करके लाएगा, देन अल्टीमेटली द सेम थिंग हैपनिंग गोइंग टू हैपन ना सर। तो फिर क्या करें? वेयर इज द फ्रीडम? फ्रीडम उसको कहेंगे अच्छा भाई एक बच्चा भी हो तो आप करो सारा, तो आपको पैसा जो है कौन देगा? भगवान देगा? ऐसा नहीं होता। एवरीथिंग विल हैव टू गो टुगेदर, इट्स एन इकोनॉमिक सिस्टम। अगर एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज के मैनेजमेंट है, उसको ये भी देखना है कि उसने कॉलेज चलाना, उसने तनख्वाह देनी है। एवरी फर्स्ट ही हैज टू शेल आउट द सैलरी। कैसे करेगा? सरकार का ग्रांट नहीं है तो नहीं कर पाएगा। तो इसलिए आपको यू हैव टू फाइंड अ मिड पाथ। लेकिन एनसीआरएफ उसको एनेबल करता है कि हाँ वो कर सकता है। करिए, आपको मना थोड़ी है, मैंने आपको बताया प्रोविजन है, यू फॉलो दैट प्रोविजन, व्हाई नॉट? Hello. Now we'll take the last question. Yes, thank you, ma'am. Sir, what I get from all this is everything boils down to employability, right? So the way we have a body which regulates the education system, can we have some sort of intervening from the government, wherein the government briefs all the industry people? Like, see, right now the standard for engineering is the industries they walk in, they have a criteria set wherein the student should be average first class, then they have written exams, then they shortlist people. Now that the structure is changed or it is evolving, I believe, can there be an intervening from the government, having a word with the industry and asking them to let the things like materialize? There's a bridging of gap between the industry and the academia. You are absolutely right. No, this is an effort which is constantly being made. I am constantly addressing all the industry bodies. Professor Jagdish Kumar also goes and attends those bodies. CIA के साथ मेरी मीटिंग हो गई, उनकी स्किल कमेटी के साथ मीटिंग हो गई, PhD CCI में मेरी मीटिंग हो गई, फिकी के साथ मीटिंग हो गई। ये जितनी बड़ी इंडस्ट्री बॉडीज़ हैं इनको सारा एक्सप्लेन करना, और जितने आप जो सॉफ्ट स्किल्स देख रहे हैं, ये सॉफ्ट स्किल्स बनाने में उन इंडस्ट्री को साथ बिठाया है कि आप बताओ क्या चाहिए। इसी तरह जब कोई कोर्स NSQF अलाइनमेंट में अप्रूव करते हैं, उसमें एटलीस्ट 2 इंडस्ट्री बॉडीज रहती हैं, कंपल्सरली 2 इंडस्ट्री बॉडीज रहेंगी, एक छोटी लघु उद्योग की बॉडी रहेगी, 3 स्टेट्स रहेंगी, 8 मिनिस्ट्रीज रहेंगी, सारे रेगुलेटर्स रहेंगे। तो दे आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ दैट एंड दे रेज देयर वॉइस। अभी रिसेंटली एक और अच्छी बात हुई है कि जो CII बाय इटसेल्फ दे हैव कम टू NCVT कि आप हमें वार्डिंग बॉडी बना दो, तो बड़ा अच्छा हो जाएगा कि जो दूसरों पे उंगली उठाते थे कि आपका क्वालिटी नहीं ठीक, ये नहीं ठीक, वो नहीं ठीक, ठीक है करो, देखो क्या होता है, तो करेंगे वो लोग, स्किलिंग करेंगे, एंड दे आर इनटू इट, बट वी आर कॉन्स्टेंटली वर्किंग विद द इंडस्ट्री। थैंक यू। Thank you, sir. Thank you, sir, for sharing these informative insights about NEP and National Credit Framework. Surely, sir, our nation's skill capital will be the engine of global growth. As these lines from Saint Ramdas Swami, आपणासी जे जे ठावे ते ते दुसऱ्यांसी सांगावे, शहाणे करून सोडावे सकळ जन. Let us resolve to spread knowledge gathered today at our respective institutes. As we proceed towards the culmination of today's event, I request Dr. Suhas Deshmukh, sir, to offer vote of thanks. Good afternoon, everyone. So it's my pleasure to provide a vote of thanks out here because this program was organized on short notice. As well as many people have worked for this, actually, including our higher education department director Mohitkar sir and vocational education, as well as IDEA system and many people. So thank you to each and everyone out here for being here for this session, and especially I would like to thank our Kalsi sir
that he is nothing but a pioneer for this NCrf and all NEP kind of an activity. And daily I am going to learn from many things from him itself. So it's our pleasure for all Maharashtrians, I will say, that you are here and you are awareing us about this NCrf and everything. Thank you, sir. And I especially thanks to this Vidyalankar management for organizing on short notice this session. Thank you everyone. Sir, I request everyone to rise for a national anthem. समोर